AC Magadh University, Bodh, in association with the Indian Council of Philosophical Research, Ministry of Education, Government of India, Bihar Pollution Control Board, and Chandragupta Institute of Management, Patna as knowledge partners. The objective of the workshop is aligned with the vision of G20 and Azadi Ka Amrit Mahotsav as research contributes to society and promotes the greater cause of humanity. This is a holistic program focusing on all the streams of science, social sciences, and humanities. And today's session is focused on social science, commerce, and management studies. The second day of the workshop has 8 technical sessions with galaxy of enlightened minds to speak on the relevant topic. In the first half of the sessions, we have 4 technical sessions in which 2 will be in online mode and 2 in the offline mode. I now invite our esteemed speaker and chairperson of the first technical session to come on the dais and take their seat. I invite Professor Nupur Bose, speaker of the first technical session, and Professor Ravi Shankar Jamwar, Dean Social Sciences and chairperson of the first technical session. Please come up on the dais and take this. Felicitation is a way to show our love and respect. I request Professor Ehtisham Khan, Professor PG Department of Political Science, to felicitate our guest, Professor Nupur Bose, with mementos in Magadh. So please come on the stage. Thank you, sir. I now request Mrs. Kavita, Assistant Professor, PG Department of Sociology, to facilitate Professor Ravi Shankar Jamwar, Dean Faculty of Social Sciences, and our chairperson for this session with mementos and Magadh. We are here with a mission to promote scientific inquiry and know the ethical means to promote the truth. Truth that is not one, and methods of inquiry that is not monolithic. Thomas Kuhn, who coined the word paradigm, admitted that the problem in social sciences is more intense because it is not unified sufficiently and the common assumptions on the people and the world are hard to determine. Today we have the choicest resource person from the academic fraternity with us. Professor Nupur Bose is a professor and former head Department of Geography in College Patna. She superannuated in September 2022. An alumni of Delhi University, she has several national and international publications to her credit. She is recipient of the prestigious Rennes Palme Award for teaching in KTH Royal Institute of Technology at Stockholm, Sweden. She is a proud recipient of Erasmus Mundus Uri India Academic Mobility Award. On behalf of Magadh University family, I extend her a very warm welcome and invite her to the podium to deliver her lecture.
Thank you to my young colleague in Magadh University, uh, Honorable Dean of Social Sciences, Professor Jamwar, distinguished guests, fellow academicians and research scholars. I beg to state that I am not from Delhi University, but very much a product of Patna University. Right from IEA to my PhD as in GCGRF, I've been in Patna itself. Anyway, so I will proceed with my lecture. If you can please put on the PowerPoint slide. Next. So this topic is on preparation of research projects in the previous please. एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपके पास क्या वायरलेस ये है माउस कैन आई ऑपरेट इट फ्रॉम हियर ओके मैडम कुछ एनिमेशन है माफ करेंगे मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है तो आई विल स्पीक एज आई सेड बिफोर टू माय कोलीग हियर शैलेंद्र जी खिचड़ी भाषा में हम बोलेंगे वैसे ही हम लोग लेक्चर भी वैसे ही देते हैं ना पूरा अंग्रेजी ना हिंदी लेकिन निश्चित भाषा में बोलते हैं बट द कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर सो ये जो टॉपिक है दिस इज प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चेंजिंग रेलेवेंस ऑफ सोशल साइंस फॉर साइंस एंड सोसाइटी Social science is a science. It is not separate from the science as we know of. And particularly under the new education policy, the barriers between the different faculties of science and social sciences and humanities have been sought to be broken down. It will be a gradual process. It is a trial and error process for the policy, but nevertheless, it has changed or there has been a paradigm shift in the research that we have been doing. So if we want to do holistic research, it has to be based upon multiple disciplines. So it has to be multidisciplinary or it has to be, in other words, transdisciplinary. इसी के साथ हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और सोशल साइंसेज में जो रिसर्च है इसका अगर हम ट्रेंड देखें इन इंडिया आफ्टर द इंडिपेंडेंस आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस we will see changes in its evolution. That is, we see changes in the evolution of social science research in the post-independence period. Just after the independence period, social science research was given priority because it helped to fix the policies, it helped to decide upon major social and economic issues, and it did a wonderful job. And to do this, the stakeholders had set up a number of universities and research institutions for the purpose of developing social sciences in the country. Again, with the onset of globalization and with the sunrise IT sector, there has been a gradual shift of research towards technical and pure scientific lines. And research has today become most market oriented. So there has been a market oriented and technical shift in the research priorities of the country. However, that has not lessened the importance of social sciences research. कहने का मतलब है कि आप जितना ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रिसर्च आप कर लें, social science underpins the fabric of the society. Without social science, no science or technological innovations can or interventions can succeed. वो sustain ही नहीं कर पाएगा. अभी वर्तमान में जैसे हम कह रहे हैं कि अभी with the onset of IT industry and technology and science, STEM has been given priority
among all other research projects. STEM stands for Science, Technology, Engineering and Mathematics. ये जो emphasis दिया जा रहा है STEM disciplines में, with the object of alleviating the problems of the masses, particularly this type of research orientation towards STEM disciplines are aimed at job-oriented, problem alleviating, poverty alleviation programs. लेकिन देखा जा रहा है कि research interventions in solving human or societal problems purely on the basis of science and technology does not sustain. I am a social science person, but I am working in projects of Department of Science and Technology, Government of India. How has that been possible? It has been possible due to the realization of this fact that there must be a social integration of science and technology. Therefore, dear audience, members of the audience, my young colleagues here, social science research is not dead. It can never be given second priority. It must be treated at par with science and technology programs. Now, social science, why is social science so important? Why is science and technology integration with societal needs so important? There are 4 or 5 points which I would like to discuss before I proceed with my PowerPoint presentation. Now, first of all, science and technology requires greater understanding of human behavior, social structures and historical processes to sustain. कोई भी technological intervention आप society पर थोप नहीं दे सकते हैं. This comes from personal experience of 20-25 years of research. Technology, which is excellent globally, fails miserably in our country because it has not adapted to our societal needs. So this is very, very important. Second is, there has to be a recognition of social construction of knowledge. Science and technology knowledge is not objective or neutral, but it is shaped by societal and cultural norms and modes. So scientific and technological interventions can succeed or can be beneficial to the society only when it takes into account the social, cultural, and the political modes or the milieu of the region or the country, whatever. Third important point why social sciences research is important is that it recognizes, social science research recognizes that the stakeholder engagement is vital for any research initiatives. Science and technology का जो interventions है वो तभी society को benefit कर सकता है जब सभी stakeholders एक साथ होकर एकजुट होकर उसे implement करने में लगे. Stakeholders मतलब stakeholders start from policy makers and ends with the beneficiaries that is the members of the community. So far we have seen barriers between the stakeholders, different sets of stakeholders. There is a barrier between government and community. There is a barrier between the academia and the society. Because of this narrow outlook that we have been possessing so far, where higher education and research is concerned, we have to do without it. So social science, therefore, can study ethical dimensions also. Science and technology can bring in inventions. They can change our lifestyle, take our standard of living very, very, take it to the higher level standard of living. But there are ethical questions which need to be answered, and that work can be done by social science research. So today, what I mean to say is that social science research and research in science and technology must join hands for holistic solution to our societal problems that we face today, whether it be in our region, whether it be in our country, or whether it be globally. This has never been so glaring and so pertinent when we consider the current pandemic that we are undergoing. The results or the impacts of the pandemic were first felt at the societal and at the economic levels. And who studied these impacts? The social scientists studied these impacts. And it is the social scientists who gave
suggestions on how to mitigate the vulnerable population that are suffering from the impacts of the pandemic, the COVID pandemic. Therefore, social science is very, very relevant today, and therefore, I would request our young colleagues to come forward and take up projects, give proposals to the concerned funding agencies, and be prepared to take work in whatever disciplines you are engaged in. Another important thing before I start my PowerPoint projection is that when you select a topic of your discipline, it must be relevant, it must address the demands of the society. Therefore, it must also be reflecting upon the political will that is prevailing. So social science research trend is primarily determined or is primarily influenced by political, economic, and social trends that are persisting today. So today, if there is a stress on health and environmental degradation, then I think in each branch of social sciences, my colleagues have ample work to do from their point of view or from the point of view of their subject, whether it be economics, whether it be political science, whether it be anthropology, whether it be sociology, history, or geography. So the relevance of the research topic will determine whether your topic will be selected or not. Primarily, before we apply for research projects, we must have research articles, peer-reviewed research articles, at least a couple of peer-reviewed research articles before we apply for projects. This means that you have done preliminary work in your chosen line of research, and therefore your project will be taken up at the pre-qualified level. So before you apply, you must always have published peer-reviewed journals as per UGC guidelines. That makes the work much more easier. So with this, I start my presentation. Okay. So definition of research, as we know of as a social scientist, it is a search for knowledge. It is an art of scientific investigation. It is not pure science. It is an art of scientific investigation, and it is an academic activity. It seeks to further the existing knowledge. It seeks to do away with misconceived conceptions also, and propounds new theories to develop the line of the subject in which the researcher is engaged. And it must have 4 characteristics. These 4 characteristics are empirical. It must be empirical in character, but not totally empirical. It must be a mixture of these, it must be having a mixture of these 4 characteristics. Empirical, theoretical, cumulative, and ethical. Empirical तो आप सब जानते हैं. What is empirical research? Because so far, where my subject is concerned, geography, till the Second World War, we were mainly indulging in empirical research. It was purely descriptive, and we wrote out the research on the basis of our reasoning capacity. Theoretical is we propounded theories on the basis of the findings, and cumulative is that research which either accepts the set theories and develops the theories further, or that research which negates the previously existing theories and builds up new theories. दोनों होता है cumulative में. Either you develop the existing theories or you reject the existing theories by your research findings and develop new theories one after another. तो इसको हम cumulative characteristic कहते हैं. और last में है ethical. All research must be ethical. इस ethical characteristic के बारे में हम आगे वाले slide में हम थोड़ा इसको expand करेंगे. I will go to my next slide. So there are 4 components of research. First, there must be a researcher. Second, research बिना finance का funding का असंभव है. Whether it be science, whether it be social science. For social science, you need money to fund your research.
to buy books, to buy journals, to go to the field to collect data, to meet the stakeholders and take interviews, to go to the field to generate interview schedules. For each and every step, you need funds. So there must be funding agencies. Third is participants and lab facilities. By participants, we need the research staff that you hire or the research collaborators with whom you have signed a memorandum of understanding. It may be of the same subject, it may be multidisciplinary. And last is the end user. Who is the end user here? The beneficiary. Any research which does not benefit society will be put in the dustbin by the funding agency. So always outcome क्या होगा आपका research का? Beneficiaries कौन होगा? उसको आप explicitly and implicitly in detail आप अपने proposal में लिखिएगा. Who are the proposed beneficiaries of a research? How will it benefit your subject? How will it benefit your career? And how will it benefit the community at large? This has to be stressed upon. So there are I will just mull over. There are actually 4 classifications of the types of research. First classification is the fundamental theoretical of pure research: physics, chemistry, life sciences, etc., etc. Then we have the empirical research, which most of the social science disciplines have been indulging in. Then we have historical research. Then field research, जो हम geographers करते हैं. Then diagnostic research. And then finally action research. Diagnostic research में हम identify करते हैं कि problem क्या है और इसको कैसे इस problem का उन्मूलन कर सकते हैं. We never say that this problem is good or bad. We don't pass judgments. We just pave the way for doing away with the problem and for bringing about solutions. So that is diagnostic research. And last is action research. When the research finding is sought to be validated in the field. For example, I have got a water filter from a company, and I would like to see whether this water filter functions in the field conditions of Bihar, rural conditions of Bihar. So I run it in the villages of Bihar. What am I doing? I'm validating it. That is also research. And whatever benefits or discrepancy arise, that will be noted and sent back to the industry so that they can rectify the technology and make that more compliant with the Bihar rural system. So that is action research, where research findings are actually made beneficial for the community through validation and other activities, interventions. So the second classification is descriptive, exploratory, and explanatory. And I need not expand on that. Third classification is the scientific research. We are social scientists. We are also from science. So the third classification is pure or basic research, whether it be physics, chemistry, life sciences, mathematics, or whether it's social sciences. Experimental or evaluative research, जिसमें experiments द्वारा हम अपना findings को निकालते हैं. उसके बाद है qualitative and quantitative research. Quantitative research, you know, statistics, etc. What is qualitative research? Qualitative research deals with the non-numerical phenomenon of the research topic. It is purely descriptive and it is based upon the reasoning capacity of the researcher. Then the fourth one is the longitudinal or cross-section research. What is longitudinal research? Longitudinal research is research carried on over a long period of time. Cross-sectional research is that research which covers a number of parameters at a single point of time. So this is the difference between longitudinal and cross-sectional. Then we have comparative. And then finally we have the latest research model according to Guthrie of 2010, pure applied policy and action research. So the types of research as we know of also has been evolving over time. In fact, in the post-war period, approximately over each decade, how we see research, what are the types, how we define research has changed. So at present, it is pure research, applied research, policy research, and action-oriented research. This is the current type of research which is in vogue in this century.
So research methods. What is research method? It is finding order with reason and or intuition within a perspective and out of disorder. जब disorder होता है, जब chaos होता है, तो उससे निकलने के लिए हमारा दिमाग काम करता है. As we say that the greatest resource in resource geography, we say that the greatest resource is the human brain. Out of the human brain emanates all other resources. तो जब हमारे समक्ष हमारे जीने में समस्या होती है, हमारे लाइफस्टाइल मेंटेन करने में समस्या होती है, हमारे वेलबींग की समस्या होती है, तब हम हमारे दिमाग पर चलती है, and then we undertake to find out ways and means to overcome the problem. That is research. So it involves exploration, verification, ordering information through a group of correlated tools and techniques. कोई एक सिंगल कारक नहीं हो सकता है. कोई भी phenomena or तथ्य is a result of multiple parameters, interactions between multiple parameters. So all such parameters have to be taken into account when we undertake any study under the modern definition of research as envisaged in the new education policy. So general research methods in use are these. I will not explain. So how then to initiate and proceed with social science research? How do we proceed? So we have two ways of proceeding with the research. Either we look at the unanswered question and try to solve that problem, or try to give an answer to that question. Alternately, we can extend our findings on a previous line of inquiry. So unanswered question का जहां तक सवाल है, वहां से ही रिसर्च प्रॉब्लम स्टार्ट होता है. जिसका सवाल का जवाब मिल गया वो प्रॉब्लम ही नहीं, लेकिन जिस सवाल का जवाब नहीं वही मेरे लिए प्रॉब्लम है. The research problem starts from that point. So the research problem is the unanswered questions, and therefore to solve that problem, एक research plan का गठन करना है. That is, a research plan or research design has to be formulated. For that, we have to first identify what is the problem. Problem है क्या? मेरे subject में उस relevant subject matter में what is the issue I want to investigate? So identification of the problem. Second is the sources to find it. कौन से source से वो problem start होता है, और या वो उस problem का identification हो सकता है. And third is how is it to be selected and defined? How will we select the problem and how will we define it? और इसके लिए research design जो formulate किया जाता है, उसमें First of all, research design में एक blueprint हमको तैयार करना है. Second, we have to set boundaries of research activity. Research जो conduct करेंगे, it can go on and on. So we must define within the parameters of our discipline what will the boundary of my research work will be. उसी boundary के अंदर हमें अपना research करना है. हम अगर economics से research करते हैं और देख रहे हैं कुछ और impact आ रहा है, कुछ chemical impact, chemistry का कुछ component आता है, तो I cannot just cross my boundary and go into research in chemistry. I have to stick to the boundary that has been set by my subject, by the scope of my subject. And then to lead the investigation to anticipate potential problems. ये जब research design करते हैं तो potential problem क्या हो सकता है इस research को conduct करने में, उसका भी अंदाजा हमें लगाना पड़ेगा. It is actually based on assumptions. Research design, research planning, it is based on assumptions. It is not final. It will change. It can be subject to change as and when and how I proceed with my research. Therefore, I find it very funny as an academician when a research scholar is asked to submit a list of chapters in the synopsis. The names of the chapters might undergo a change. The listing pattern will undergo a change as I come up with my findings. Then, if it is already said beforehand, how do I justify the changes that I have encountered in the process of my PhD work? So this thing has to be kept in mind. Academicians have to work with a free mind. So next,
research design therefore consists of identification, चैप्टर डिसाइड होगा तो बदलेगा नहीं। selection and definition, literature survey, preparation of bibliography, hypothesis formulation, interview schedules, and sampling design. These are the set goals you all know of, particularly those colleagues of mine who have already written papers and are doing projects. However, currently, those projects that are being accepted have these qualities, which I'm going to mention in these following slides. How to write a social science research paper. First of all, you have to choose a topic. Obviously, it has to be relevant. It has to comply with the requirements of your subject. Second, you must have do literature review, and it has to be studied, and you have to identify what are the knowledge gaps. कहाँ gaps exist कर रहा है, जहाँ से आप अपना research plan तैयार कर सकते हैं. So for that, you have to make notings. You have to create. You have to do a lot of writing on that part, and also you have to pay special attention to the citation methods, which I will discuss in my later slides. Then third is the research plan, planning the research process and methodology. Fourth is you have to present your findings. Fifth is the conclusion. Which is the summary of the main findings. Conclusion हम summary देते हैं, and जिसमें हम अपने hypothesis drop set लेकर उसको justify करने का प्रयास करते हैं, and the significance of this work and its contribution to the field of my subject. And lastly, format and cite. You have to format your article according to the requirements, according to the given template, and also you must follow the proper citation procedure. So writing a research plan or proposal. How do you write a research plan or proposal? In this, first you have to identify, basically the first 3-4 points are same for all. Whether you write a research paper, whether you write a research proposal, the first 3-4 points are similar. Identify the research question, review literature, determine research methodology. आप किस तरह से डेटा का एकत्रीकरण करेंगे, किस प्रकार का डेटा एनालिसिस करेंगे, और कौन-कौन से ethical norms आप follow करेंगे. That is very, very important. That comes under methodology. And then you have to create a timeline. You cannot go on indefinitely. So if you have 2 years time, then for every month you have to prepare a schedule, a timetable. इसके लिए हम Gantt chart, flow chart, etc. हम use करते हैं दर्शाने के लिए कि कितना week या कितना दिन लगेंगे for each activity. क्योंकि research design में ही हम plan कर देते हैं step 1, step 2, step 3, step 4 क्या होगा, तो उसको timeline में fit करना है. Then you have to determine the sample size. This I will come later. Then you must have you have to outline the data analysis plan and define expected outcomes. This is very important. And then you have budget and resources. Expected outcomes actually determine whether your project will be taken up for further consideration or not. Proposal. And the budget has to be justified. Each and every rupee that you spend has to be justified. And when you go for writing, if you are in the final stages of your research project writing phase, then I think your institution has to open a PFMS account, because all the money now comes into the PFMS account. Previously, we did not have that. But now, since the last 2-3 years, the funders, the government agencies are insisting on having that account because the money comes there. And secondly, when you allocate your budget for recurring and non-recurring expenses, you have to refer to the GEM portal, GEM portal, and find out what the cost of the various items are, and accordingly you have to fix your budget, because everything is verified by the funding agency. And then you have to identify potential challenges and create a timeline. And finally, you have to revise and edit your entire proposal. ये proposal का बात कर रहे हैं, paper का बात नहीं कर रहे हैं, जहाँ पर conclusion already है. Proposal में आप propose कर रहे हैं, you are planning that this is what I am going to do. So all these things have to be taken into account. So research hypothesis क्या है? इसमें 5 पॉइंट आप ख्याल कीजिएगा.
First, the research question has to be identified. Second is literature review. Third is the research Question formulation. research questions. And fourth is the formulation. And fourth are the variables. There is independent variable and there is dependent variable. How are changes in the independent variable going to affect or going to impact the dependent variables? That has to be assessed by you. And fourth, hypothesis का statement आप form करेंगे. तो ये सारा पैरामीटर्स, 4 पैरामीटर्स ही आपका फिफ्थ पैरामीटर इन हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन को डिटरमिन करेगा. सेकंड, लिटरेचर रिव्यू. लिटरेचर रिव्यू आप कैसे करेंगे? People are actually very vague when we ask them to do literature review. These are the different steps by which literature review has to be done. This PowerPoint presentation is being left with your university. You can take copies of it or you can make download it, and you can please pay attention to the procedures. कैसे literature review करेंगे? If you follow these procedures, you succeed, or there will be gaps. Then research methodology. This is where, which is very important. Data collection. So either it will be through surveys, questionnaires, or interview schedules. Then you observe, because हम empirical भी है यहाँ पर. In social sciences research, we adopt many methods. Empirical ho, quantitative ho, qualitative ho, everything. Deductive, everything inductive, everything is incorporated in, because we seek for holistic solutions. And case studies, experiments, content analysis, secondary data analysis. Then data analysis कैसे करेंगे? The different ways of there are 6 methods of data analysis. You may follow 1, you may follow 4, you may follow all as per your research question and hypothesis. आपका research question and hypothesis will determine इस 6 में से कौन सा analysis method आप apply करेंगे. So then there are ethical considerations. जब आप research करते हैं तो आप primary data भी generate करते हैं. Secondary data is already there. But primary data जब generate करते हैं, then the question of ethics, research ethics come in. So these are the points which have to be considered, whether it be social science research or pure research, or applied research or action research. Informed consent, जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हैं, जिसका आप क्वेश्चनर पूछकर क्वेश्चनर भर रहे हैं, you have to have their written consent. If they can't sign their names, then please have their thumbprint on the consent form. Consent form का format भी होता है. I can help you out with that if anybody wants. And based upon your research proposal, you have to prepare the consent form. Then there must be confidentiality. वो बहुत कुछ बताएगा, आपके रिसर्च के लिए relevant है, but it is not for public platform. So that degree of confidentiality has to be maintained. Not only that, participants' confidentiality के अलावा, the data confidentiality also has to be maintained. Until and unless you submit the findings to the funding agency, your data is the property of the funding agency. Even if you have to publish papers, you have to seek the permission of the funding authority first. So this has to be taken in mind. Voluntary participation. जब आप fieldwork में जाते हैं और question पूछते हैं from various stakeholders, you must have their voluntary participation. If they do not want to participate, you will not insist, so that the interviews and the questionnaires are filled up in a very congenial atmosphere. And then there is respect for cultural diversity. So the cultural modes may be strange to you. You should respect their cultural practices. Ethical use of data. Data should not be misused. Data should not be misinterpreted. Data should not be used to spread social prejudices. So ethical use of data is also very important. And then transparency of the research methods, findings and limitations. ये हम last में consider करते हैं जब research findings का dissemination करते हैं. We hold workshops on our research project. We conduct awareness campaigns. We hold dissemination meetings of all the stakeholders, whether it be from the policymakers, whether it be NGOs, or whether it be the community members. So these things have to be taken into mind when we take into consideration the ethics, research ethics. Again, this relates to the sample size.
Either you go for power analysis, that is, you take the minimum number of samples that is essential for fulfilling your justifying your hypothesis. Then you can follow the rule of the thumb. Rule of the thumb क्या है? For qualitative research, you take a minimum of 30 samples, and for quantitative research, you take a minimum of 100. Then there is the sampling error. Either the margin of error, you have to reduce the margin of error. The variations in your data analysis must be reduced to a minimum. And finally, there is saturation. By saturation is meant that one can go on collecting data until the demands of the research proposal or the research objective is fulfilled. This, however, is dependent upon the resources available at hand. This is actually practiced in multidisciplinary resources where you go on experimenting until the desired objective is attained. And that involves a huge amount of funds, which is not possible. So I think you should not go for saturation sample size. Last is citing literature. So you take notes and then you apply the citation style. जब भी आप कुछ पढ़ते हैं और आपको लगता है कि ये मेरे रिसर्च के लिए relevant है, you will take it down and then you will take the authors, titles, publication date and other relevant details for your bibliography. Second is the citation style. APA or Chicago method. Usually in social sciences, we use the APA method, that is American Psychological Association's method, in which after every sentence or para or idea that we quote from somebody, we append within bracket the title of the author, put a comma, and then we put in the year of publication. And then for the details of the publication, we prepare a separate list and append it at the fag end of our paper or research report. Then we can also include in-text citation. After quoting somebody, you put in the title and the year of publication, and then create a reference list and check formatting. Reference list and formatting के लिए, this formatting is dependent upon the format that is used by the prescribed by the institution or by the publishers. So you have to follow their format of citation. So that brings us to the end of my lecture. Thank you very much. So if there are any questions to be asked. Yes, please. Mic. Mic. Huh? Wireless mic. Yes. Wireless mic. वो दूर है. दूर है. जितना तो मुझे हाथ पकड़ सकता है. Can you please take mouse? Thank you. कौन सा मैम? Which one? You have to go back. Analysis. Yes. No. Further down. Next. वॉल्यूम बढ़ाया जाएगा. Next. Yeah. Descriptive statistics. Descriptive statistics means mean median mode. ये data distribution के बारे में बताता है. उसके बाद है inferential statistics, जिसमें से आप inferences draw करते हैं, जिसमें आप अपना hypothesis test कर सके और अपना statistical significance of results को भी determine कर सके. उसके बाद आता है qualitative analysis. Qualitative analysis relates to non-numerical facts and observations जो आपने महसूस किया होगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा, और इसमें इससे इस क्वालिटेटिव एनालिसिस के द्वारा you understand the meaning behind the participant's experience. जो आपको इंटरव्यू दे रहा है, जो पार्टिसिपेंट है, वो क्यों बोल रहा है, what is his behavior, what is his attitude, what is his response,
उसका एनालिसिस आप क्वालिटेटिव मेथड से करते हैं। तो इट डज नॉट इन्वॉल्व नंबर्स, जो क्वांटिटेटिव में करते हैं उसमें तो स्टैटिस्टिक्स है, शेयर मैथमेटिक्स, बट हियर इट इज क्वालिटेटिव। और इसके लिए सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं, जैसे एन वीवो हुआ, उसके बाद मैक्स क्यूडीए है, क्यूडीए माइनर एटसेट्रा है, जो कि क्वालिटेटिव एनालिसिस को तुरंत करने में बहुत मदद करता है। तो यू कैन गो फॉर दिस एन वीवो को देखिएगा, एन वीवो इट इज देयर। I can send it to you if you want. I can send it to Meenakshi here, and she will give you the details for qualitative analysis software. Then we have content analysis to analyze on a visual phenomena, and to for understanding social phenomena, public opinion, etc. For example, आप टीवी देखते हैं, आप किसी का भाषण सुनते हैं, तो वो हो गया कंटेंट, या आप कुछ पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या जर्नल पढ़ते हैं, किसी का लेख पढ़ते हैं, तो उस कंटेंट से आप क्या, उसके व्यू पॉइंट से आप क्या डिड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, देन कोई पॉलिटिशियन अगर कुछ लेख लिखे, तो उसको आप एनालाइज करके तब आप जो रिसर्च कर रहे हैं उससे आप उसका फाइंडिंग्स को आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, उसको कहते हैं कंटेंट एनालिसिस। देन डिस्कोर्स एनालिसिस, ये लैंग्वेज और कम्युनिकेशन से डिस्कोर्स एनालिसिस रिलेटेड है। जैसे कि टीवी में हम सुनते हैं डिस्कस कर रहा है, तो उस एनालिसिस से, वो जो एनालिटिकल डिस्कोर्स होता है, उससे भी हम कुछ डिड्यूस करके हम अपना रिसर्च फाइंडिंग्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। एंड लास्टली वी हैव ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी मींस जो एग्जिस्टिंग थ्योरी है वो जमीन पर जाकर हम देख रहे हैं कुछ और भी पैटर्न इमर्ज किया है, और वो थ्योरी इस परिस्थिति में उपयोगी या लॉजिकली एप्लीकेबल नहीं है, then I form my own theory through my findings that is based upon ground reality, that is called grounded theory. तो ये सारा डिटेल्स आपको पावरपॉइंट से मिल जाएगा। yes, बहुत मुबारकबाद। मैं सोच ही नहीं रहा था कि हम लोग मगध यूनिवर्सिटी में, लग रहा था कहीं विदेश में है और लेक्चर सुन रहे हैं। और थोड़ा सा अपने मेरे जो रिसर्च स्कॉलर हैं के लिए और टीचर के लिए ये जानना जरूरी है कि हम लोग जब रेफरेंसिंग स्टाइल की बात करते हैं, मोर और लेस 11 रेफरेंसिंग स्टाइल ये सबसे मशहूर है और आज के दिनों में तो सबसे पॉपुलर हो रहा है आज के सर। हाँ, को फॉलो। और मुझे जहाँ तक याद है कि वगैरह में वही से शुरुआत है, लेकिन इसको हम लोगों ने जहाँ तक किया था हार्वर्ड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग जी, जो सबसे पहले 18 में था। यस, तो शिकागो, अच्छा अगर माइक को थोड़ा पास, हिंदुस्तान में भारत के जितने भी यूनिवर्सिटी, तो कहीं पर भी हम लोग देखेंगे तो इंडियन रेफरेंसिंग स्टाइल, इंडियन लैंग्वेजेस में वो कहीं भी डेवलप नहीं। भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी में मेरा क्वेश्चन यही है कि जब हम लोग यहाँ पे अलग अलग भाषाओं में, हम लोग किसी स्टेट में है, बिहार में है, हमारे बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं, लिखते हैं, प्रोजेक्ट लिखते हैं, सब पेपर लिखते हैं, मीडिया में जो इंस्ट्रक्शन कहा वो हिंदी है। अफसोस है मैडम कि किसी लेवल पर भी अब तक ये नहीं सोचा गया है कि इंडियन रेफरेंसिंग स्टाइल क्या होगी। जो मेरे बच्चे हिंदी में लिखते हैं थीसिस और जो दूसरे लैंग्वेजेस में लिखते हैं, उसके लिए हमने डेवलप ही नहीं किया। और आप सरप्राइज होंगे मैडम, मैं उस रास्ते से गुजरा हूं बहुत बार सुपरवाइज करते वक्त, बच्चों की परेशानी देखने को मिलती है कि बच्चे हैं जब एक बार लेकर के आते हैं अपना थीसिस चाहते हैं, उसकी रेफरेंसिंग जो देता है, तो जो रेफरेंसिंग कुछ है, बिब्लियोग्राफी कुछ है, कहीं पर शिकागो फॉलो किया हुआ है, कहीं लाइन में वो एफके फॉलो किया हुआ, हिंदी में लिखते और अंग्रेजी में उसकी रेफरेंसिंग, अंग्रेजी में बिब्लियोग्राफी। बट द सॉल्यूशन, मुझे लगता है कुछ लोगों ने शायद काम करना शुरू किया। सर, यस सर, आई एग्री विद यू, देयर इज अ प्रॉब्लम। और आप के जो, यस सर, मुझे लगता है कि उनसे हमारी मुलाकात हुई थी। अच्छा, उनका नाम है राम कुमार तिवारी, उन्होंने इंडियन रेफरेंसिंग स्टाइल पे बुक लिखी, आपकी जगह
तो उन्होंने कहा कि भाई हमको ठीक है एचडी तो ठीक है, लेकिन हमको हिंदी में इसको लिखने की कोशिश करनी चाहिए और यूनिवर्सिटी को यूजीसी को हम लोग को सोचना चाहिए कि आखिर जो मेरे बच्चे हैं जो परेशान होते हैं, एक सुपरवाइजर के पास गए और वो परेशानी होती है, दूसरे के पास एक ऐसे नहीं ऐसे का क्या सॉल्यूशन है, बड़ी सा सॉल्यूशन है सर। यस आई गेट योर पॉइंट। आप ही की ज्योग्राफी करना है। हाँ मैंने देखा। यस सर आई गेट योर पॉइंट, आई गेट योर पॉइंट सर। देखिए सर, ये एक्चुअली अब तक हायर एजुकेशन यूनिवर्सल लैंग्वेज को फॉलो करते आ रहा है, इसीलिए हम लोग अंग्रेजी में बहुत करते हैं। अब ये राष्ट्रभाषा में इसको कन्वर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है केंद्रीय सरकार द्वारा और विभिन्न राज्यों द्वारा, लेकिन ये लैंग्वेज डिवाइड रहेगा सर। साउथ इंडिया में अंग्रेजी छोड़कर वो पढ़ेगा नहीं और नॉर्थ इंडिया में वी गो फॉर राष्ट्रभाषा। तो आई वुड सजेस्ट कि कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भाषा है उतने भाषा ओपन माइंडेड होकर विभिन्न जो हमारे रिसर्च स्कॉलर्स है वो जिस भाषी है, मतलब whichever language they follow, they should try and do their research, but again they will face a problem क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन अपडेटेड नॉलेज जो है वो अंग्रेजी भाषा में आज भी रखा हुआ है। A fraction of books in geography has been translated into Hindi. हायर एजुकेशन में जाकर, इवन पीजी में जाकर बच्चों को अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा। इंटरनेट पे भी सारा मटेरियल अंग्रेजी में है। इनफ्लिपनेट में जाइए, मैक्सिमम किताब आपको अंग्रेजी में डाउनलोड करना पढ़ने को मिलेगा। सो भाषा सीखना पड़ेगा, अंग्रेजी भाषा सीखना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमें राष्ट्रभाषा का उपयोग होल स्केल में उस लेवल में पहुंचने के लिए काफी समय लगेगा, लेकिन तब तक रिसर्च तो बंद नहीं रह सकता है सर। जहां तक आपका साइटेशन का मेथड का सवाल है, this itself is a topic of research. How do I evolve a citation pattern which is suited for in the Indian context, or where Hindi as a Rashtra Bhasha is used? So that is it. Morning, ma'am. Thank you for this wonderful presentation of yours. I have a simple question regarding sample size. As you know, research, the sample size minimum 50-30, and for quantitative research, the minimum sample size. Right. What about the mixed method? When we are using both quantitative and qualitative together, what could be the minimum sample size? In a single method, you don't you derive conclusions from both and try to, because when you do quantitative, you stick to statistics. In cases of like research, we use both method. I have myself used mixed method, both quantitative and qualitative, to validate and collect data. For same calculation. Yes, sir. In cases of actual research. For same calculation. Not for calculation, like to validate the data. To collect. Yes, of course. There you can use the mixed method. But I'm saying the minimum. Yeah, the minimum number is 30 for qualitative and 100. Minimum is 100. It is not fixed at 30 and 100. No, I get your point, but for mixed method, what would be the minimum sample size? And we just to know from you have to justify that. If you choose a number in between 30 and 100, suppose you choose 70, then you have to justify how does it explain your hypothesis. Okay, yeah. If you justify, your research is done. If you cannot justify, you have to go back to your desk. Thank you, ma'am. And another thing I was forgetting, sir, एक और ये कहा, आपने प्रश्न उठाया था, अच्छा हम बाद में बताएंगे। Thank you, ma'am, for your comprehensive lecture on writing the research project. All the steps involved, gave very detailed analysis of it, and you also explained the significance of social science research and that knowledge should be socially constructed. Thank you so much, ma'am. I request the chairperson of the session to please come with remarks. Connected है
सत्र के मुख्य वक्ता मिसेज नुपुर घोष, सभागार में उपस्थित राजनीति विज्ञान विभाग के प्रशांत साहब, राजनीति विज्ञान विभाग के हैं सोशियोलॉजी विभाग के चौधरी जी, मीनाक्षी जी, अन्य स्नातक विभाग के अध्यापक गण, सभागार में उपस्थित सुधारक, आपको होस्ट बना देंगे, आपको होस्ट बना अन्य देंगे, छात्र छात्राएं, बना दीजिए होस्ट, आपको होस्ट बना रहे हैं। अभी आप लोगों ने मिसेज नुपुर घोष को सुना। उन्होंने शोध प्रपत्र किस तरह तैयार किया जाएगा, शोध कार्य किस तरह से किया जाएगा और उसकी क्या महत्व है, इन बातों पर बड़े ही सटीक ढंग से और बेहतरीन तरह से अपने विचारों को रखा। टॉपिक किस तरह से सेलेक्ट किया जाएगा, रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होगा, डाटा का कलेक्शन कैसे होगा और रिसर्च के दौरान जितने भी खंड हैं उन सभी खंड में आने वाले सावधानियों के बारे में भी उन्होंने विस्तार से अपनी बातों को रखा है। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समयों में लोगों को, शोधार्थियों को शोध प्रोजेक्ट तैयार करने में या अपने शोध निबंध तैयार करने में बहुत ही मदद मिलेगी और वो अपना काम बहुत आसानी से और बेहतर से कर सकते। इन्होंने एक बात की जो चर्चा की, जो शोध कार्य के महत्व से संबंधित है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये निश्चित रूप से विकास के लिए, आगे बढ़ने के लिए, समाज को विकसित करने के लिए आवश्यक है, लेकिन उसका प्रयोग कहाँ हो? वह प्रयोग समाज पर होता है, मानव समुदाय के लिए। वह टेक्नोलॉजी मानव समुदाय यानी सोशल साइंस के अंतर्गत जो लोग हैं, जो समाज है, जो व्यक्ति हैं, उन पर किस तरह से प्रभावित होगा, कितना वह उसके लिए सहायक होगा, इसका ध्यान रखना आवश्यक। आज रिसर्च वर्क जो भी किया जाए वह कितना रिलेटिव है, आज के परिप्रेक्ष्य में वह किस तरह से उपयोगी साबित हो, इन सब बातों का इन्होंने अपने व्याख्यान में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया है, बताया है। उम्मीद है आप सब इनके स्पीच से लाभान्वित हुए होंगे और ये काफी नॉलेजेबल इनका स्पीच रहा। हम लोग सब इनके लिए आभारी हैं। मैम, आपने अपने व्यस्तम समय में से आकर यहाँ हम लोगों के बीच अपने वक्तव्य को रखा, इसके हम आभारी हैं और आपका बहुत धन्यवाद। Thank you. With this, we come to the end of the first technical session for today. There's an important information for participants. सभी प्रतिभागियों के लिए एक आवश्यक सूचना है। इस सभागार में जगह की कमी है। अगर किसी यहाँ सीट नहीं मिल रही है तो आप कमरा नंबर 208 में चले जाएं। वहां हमारे नेक्स्ट टेक्निकल सेशन का सीधा प्रसारण किया जा रहा है। आई रिपीट, जिनको भी इस सभागार में जगह नहीं मिल रही है वो कमरा नंबर 208 में चले जाएं। वहां नेक्स्ट टेक्निकल सेशन का सीधा प्रसारण किया जा रहा है। इसी फ्लोर पे बाईं तरफ कमरा है। थैंक यू। We'll now begin with the second technical session for the day. This session is going to be in an online mode, and our guest speaker for this session, Dr. Magadh, has already joined us. On behalf of Magadh University, I welcome you, ma'am. A brief introduction to our eminent speaker. Dr. Amrit is an associate professor in the postgraduate department of history, AIM College, Patna. She is an alumna of Sindhu College, Delhi University,
and has presented papers in national and international seminars and conferences. Dr. Ramrit specializes in ancient Indian history and environmental history, focusing on traditional water practices. She has worked extensively on tracing present status of traditional water management in Bihar, taking a critical approach towards revival of traditional surface water storage and rainwater harvesting systems. She is working on an environment-related project on nature-based solutions for water management in the peri-urban, bringing ecological, social, economic dimensions. She is also engaged in a research project awarded by Bihar State Pollution Control Board. Presently, she is the coordinator of IQAC program officer of NSS and professor in charge MBA in AN College, Patna. I now invite Dr. Ramdev for a guest lecture. Over to you now. Thank you so much. We just had a wonderful presentation by Professor Nupur Bose on research ethics and project writing. I thank the Vice Chancellor of Magadh University, Professor Shahiji, for inviting me for this lecture. And I'm so sorry I could not be present in person. Not that I would have loved to be there, but I had a slight accident due to which I could not travel. So we start with the workshop which you have, and let me congratulate the organizers for such a interesting and such a relevant topic for the researchers and the students present there, research ethics and project writing. So we have two terms here, research ethics and project writing. I will be connecting both of these. So first, let me define what these two are. Research ethics, it is a set of ethical principles which governs the conduct of your research, whether you are doing it on humans, whether it is on animals. Throughout your research process, research ethics is very, very important. And project writing, that is the process of a written document which you are able to plan out after you have done your research. So that would include the outline of the plan, the methodology, and the result of the research project that you would be going to. Now this shows the journey which you're going to undertake. मैं आपके ये जो project writing को एक journey के रूप में ले रही हूँ, क्योंकि it takes time और इसके अलग-अलग पड़ाव हैं which you have to undertake, right from formulating a research problem to conceptualizing research design to constructing an instrument for data collection, selecting sample, preparing a proposal. And in all these, ethical issues are interrelated, and finally you come up with your project work. So सबसे पहला पड़ाव है वो है to identify your topic. आपको किस चीज पे रिसर्च करना है. अब टॉपिक को चूज करने के लिए कि किस पे आपको करना है, few things you should consider. That depends on person to person. पहला है कि वो जो आपने टॉपिक चूज किया है, क्या वो आपके फील्ड ऑफ स्टडी से रेलेवेंट है, आपकी लेवल ऑफ एक्सपर्टीज क्या है उस टॉपिक के लिए, और is it relevant as a professional for you to take up that study. Second consideration that you should take is whether the topic which you have chosen or the problem which you need to study, is it feasible to conduct research on that? क्या आपको उसका मैग्नीट्यूड कंसिडर करना है कि उस टॉपिक पे या तो एक ऐसा टॉपिक है जिस पे आपको फंडिंग रिक्वायर्ड है, तो यू शुड गो अबाउट दैट कि अगर विदाउट फंडिंग कैन यू डू दैट रिसर्च. उसकी feasibility you have to check.
क्या आप उतना ट्रैवल कर सकते हैं? क्या आपका जो ऑडियंस है और जो सैंपल है जिसको आपको स्टडी करना है वो आपके रेलेवेंस में है? एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आई थिंक इज वेदर द एरिया ऑफ योर रिसर्च इज इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग। क्योंकि अगर आप ऐसा चूज कर लेंगे जो आपको बाद में फिर लगेगा कि भाई मुझको तो बिल्कुल इसमें ना समझ आ रहा है ना इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो ये आपकी जर्नी खत्म नहीं होगी। यू विल नॉट बी एबल टू सस्टेन द रिसर्च टिल द एंड। और आजकल जो रिसर्च हो रहे हैं, इनफैक्ट आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी वी गिव अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन इट, दैट इज ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप सोशल साइंस के हैं तो आप एक ऐसे फील्ड में नहीं जा सकते हैं जिसमें थोड़ा साइंस इन्वॉल्व है। देन यू शुड हैव अ टीम जिसमें यू हैव सोशल साइंटिस्ट ऑल्सो, साइंस के लोग भी हों, सो दैट यू कैन अंडरटेक। तो इस तरह का जैसे कि अभी आपको बताया गया, द रिसर्च विच वी आर डूइंग इन which has been given by pollution control board, so that is again an interdisciplinary thing जिसमें अभी प्रोफेसर नुपुर बोस जिनको आपने सुना वो भी इसमें इन्वॉल्व है। तो she has almost told you about everything, so I would like to stress on those aspects जो शायद उस पे इन्होंने कम कहा हो। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट चीज while you are formulating your research problem, in fact आप research problem formulate करने के पहले से ही literature review लोग करते हैं। literature review is a very very important aspect of project writing, क्योंकि ये जो है आपके हर एक ऑपरेशनल स्टेप पे this will help you, your literature review. It gives a theoretical background of your study and it helps to establish the link between what you're proposing to examine, क्या आपका एरिया ऑफ स्टडी है और उस एरिया में ऑलरेडी क्या क्या लिखा जा चुका है, क्या उसमें तो जब आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे तो ये आपको मदद करेगा ये गैप देखने में कि और ये लिंक एस्टैब्लिश करने में बिटवीन व्हाट यू आर प्रपोजिंग टू एग्जामिन and what has already been studied. और तीसरा है कि it will help you to integrate your research findings into the existing body or language or knowledge जो already language knowledge है उसमें आपका research किस तरह से उसमें fit करेगा। तो we can say that ये जो है it आपके ideas को clarify करता है literature review, ये हेल्प करता है इन डेवलपिंग योर रिसर्च मेथोडोलॉजी। Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, sorry to interrupt you, but the slides are not moving. It's not in the slideshow mode. Excuse me, I could not get you. Your slides are not moving, ma'am. Can you put it in the Slide slideshow is mode? not visible. No, they are visible, but they are not moving, ma'am. You have to put it in the slideshow mode. Okay, all right. Thank you. आप नहीं कर सकते एनी टेस्ट। Ma'am, you need to start the slideshow. Please start the slideshow. Oh, ma'am, you need to start the slideshow. Yeah, I'm doing that. On the top
Ma'am, there is an option Ma'am, the slideshow icon of slideshow will be on the top somewhere. on the top toolbar. Top Yeah, yeah, toolbar. I'm trying that. I don't know what is wrong with this. स्लाइड यहाँ मांग ले क्या स्लाइड यहाँ मेल पे ले ले और यहाँ से हो जाएगा ना हो जाएगा. व्हाट्सएप पे मंगा ले स्लाइड यूनिक है Ma'am, click on slideshow. Ma'am, if you want I'm to clicking bring on the that. I slide don't know first, what is wrong with it. Ma'am, please give us the ma'am, remote on the control. toolbar, please see blue ribbon on the toolbar, top toolbar, blue ribbon. On that slideshow is written. Top toolbar, blue ribbon. Now, हाँ, Yes, एक मिनट वापस Just a आइए. sec. yes, next to it. Yes, वापस yes. आइए, कुछ गड़बड़ हो रहा है. Then just click on this. Ma'am, just give me a moment. I'm controlling her. I'm controlling her desktop. The slideshow जो share हो रहा है. Let me start again. Wait. Okay, ma'am. इसका 2 minute slideshow नहीं. Ma'am, we'll try to manage it from our end. Let us reshare it because it's an application Ma'am, issue. you can share the slide from our end. We are ready for that. Is it okay? Just give us a minute, ma'am. Ma'am, can you please give me the control? Thank you. I think this is on slideshow now. It was on slideshow, in fact. Now, once the slideshow begins, ma'am, click on the share screen and select the screen that is displayed for the slideshow. Instead of sharing the current screen, share the screen where the slideshow is in full screen mode. That is, I was doing slideshow only. This is slideshow which I have clicked. But I don't think it's not share because we can see only the one slideshow mode. She can continue. Ma'am, please continue with this only. Now can you see? Ma'am, the problem is still persisting. You can continue with your lecture. Because we have positive time now, you can continue with your lecture. All right. We were in doing literature review. So in literature review, I had told you what is the importance, why it needs to be done. And basically, there are 4 steps in literature review. One is to search the existing literature in your area of study, whatever you have undertaken. The second is reviewing the literature which you have selected. This will help to develop a theoretical framework as well as a conceptual framework. Hypothesis is another very important area is जो आपकी journey है उसमें. It brings clarity, specificity, and focuses on the research problem. But it is not essential for a study. जरूरी नहीं है कि आप एक hypothesis बनाएं. Because it is a tentative proposition. बाद में हम qualitative और quantitative research को अलग-अलग देखेंगे. But usually qualitative research में hypothesis नहीं use होता है.
और जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में इट इज far more prevalent. Or it is important that your hypothesis should be simple, specific and conceptually clear. कि आपका hypothesis है कि अगर हम ये study करेंगे तो ये result आएगा, तो ये आपका एकदम specific होना चाहिए, ये नहीं कि आना चाहिए या कुछ. So one of the difference in qualitative and quantitative research is the extent to which we use hypothesis और कितना importance हम उसको देते हैं. Now we come to conceptualizing the research design. आपने एक topic select कर लिया, you have done your research view, you have formulated a hypothesis. Now we come to the research design की एक plan, एक structure, एक strategy of investigation so as to answer the question of the problem which you want to look into. So this will involve collecting data as basis for testing the hypothesis, क्योंकि जो hypothesis आपने बनाया है उसको test करने के लिए आपको data चाहिए और analyze करना होगा जो data आपने collect किया उसके बाद उसका result. तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो स्टडी डिजाइन्स जो होते हैं उसके बेसिक डिफरेंसेस ये हैं. जस्ट इन वेरी ब्रीफ, जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है यूजेस स्टैटिस्टिक्स, जो अभी आपको प्रोफेसर नुपुर बोस ने काफी डिटेल्स में बताया है, और क्वांटिटेटिव रिसर्च में ज्यादा ऑब्जर्वेशंस और उसके डिस्क्रिप्शंस होते हैं. सिंस स्टैटिस्टिक्स इज बीइंग यूज्ड इन क्वांटिटेटिव रिसर्च, डेटा कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली. Data can be observed in qualitative, but cannot be measured. Quantitative is supposed to be objective, whereas qualitative is subjective. The quantitative research uncovers measurable data to formulate theories and facts and uncover patterns, which जहाँ पे जो qualitative होता है उसमें आप अंडरस्टैंड करते हैं क्या है उसके पीछे रीजन, ओपिनियन, मोटिवेशंस. तो जैसा अभी हमने जस्ट बताया था, हाइपोथेसिस इज मेनली यूज्ड इन क्वांटिटेटिव. हाइपोथेसिस कैन बी यूज्ड, मे नॉट बी यूज्ड इन क्वालिटेटिव रिसर्च. ये हाईली स्ट्रक्चर्ड होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव इज अनस्ट्रक्चर्ड. और जो सैंपल पॉपुलेशन इज लार्ज इन क्वांटिटेटिव and it is small, और सैंपल स्ट्रक्चर पे अभी प्रोफेसर नुपुर बोस ने काफी डिटेल में बताया है, so I'm not going over it again. तो ये हमने क्वालिटेटिव, लेकिन मोस्ट ऑफ द रिसर्च दे आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. ऐसा नहीं है कि केवल क्वालिटेटिव है और केवल क्वांटिटेटिव है. और इन रियल लाइफ अगर आप रिसर्च कर रहे हैं और आप लोगों ने जिन्होंने किया है, तो यू मस्ट हैव सीन it is a combination of both. And I myself strongly believe that both are very important to portray a complete picture of your research. A good researcher should have skills or needs skills, both the skills that is of qualitative and quantitative. तो अगर आपकी quantitative skill उतनी अच्छी नहीं है, so you can do a research with someone who has more quantitative skills. And सभी profession में हम literature we undertake a research. अब हम आते हैं data collection. जब हमने सारा अपना plan out कर लिया कि क्या है हमारा problem, क्या literature review कर लिया to see what the gap is, किस चीज पे हमको करना है या क्या चीज हमको सप्लीमेंट करना है जो रिसर्च ऑलरेडी हुआ है, तो उसके लिए डेटा कलेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो डेटा कलेक्शन जो है वो जो आई थिंक मोस्ट ऑफ अस नो दैट दो प्रकार का सोर्सेज होता है, सेकेंडरी सोर्स और प्राइमरी सोर्स. सेकेंडरी सोर्स में आपके डॉक्यूमेंट्स आ गए, गवर्नमेंट पब्लिकेशन जो पहले रिसर्च हुआ है. तो जो लिटरेचर रिव्यू आप करते हैं
that is basically your secondary source. उसमें पर्सनल रिकॉर्ड्स, क्लाइंट हिस्ट्री, सर्विस रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा सारी आ जाती हैं। और जो डेटा कलेक्शन जो होता है, तो बोथ मोस्ट मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन जो है कैन बी यूज्ड इन दोनों क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च में। ओनली थिंग इज कि जिस तरह से हम उसको कलेक्ट कर रहे हैं उसमें थोड़ा चेंज आ जाता है। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूंगी कि अगर एक ऑब्जर्वेशन इज रिकॉर्डेड इन अ नैरेटिव और डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट, तो वो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन हो जाता है। और उसी ऑब्जर्वेशन को अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं इन अ कैटेगोरिकल फॉर्म या एक स्केल पे, आप उसको 10, 9, 8, 7 का एक स्केल दिए, तो इट विल बी क्लासिफाइड एज अ क्वांटिटेटिव फॉर्मेट। और जैसे इंटरव्यूज जो आप ले रहे हैं, जो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है, उसको आप एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में, एक नरेटिव फॉर्मेट में अगर आप लिख रहे हैं, तो दैट बिकम्स अ क्वालिटेटिव मेथड। बट एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और उसके इंफॉर्मेशन को आप रिस्पॉन्स कैटेगरीज में अगर आप लिख रहे हैं, उसको क्वांटिफाई कर रहे हैं, तो इट बिकम्स अ क्वालिटेटिव मेथड। और यूजुअली जो हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं फोकस ग्रुप से, क्योंकि जब आप कोई रिसर्च करते हैं, फोकस ग्रुप डिस्कशंस आल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ इट, या हम ओरल हिस्ट्री किसी से ले रहे हों या नैरेटिव्स पूछ रहे हैं, उसका खुद का एक्सपीरियंस ऑन दैट, तो ये सारे जो हैं वो क्वालिटेटिव हो जाते हैं इन नेचर। तो ये हम कह सकते हैं कि नन ऑफ द मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, चाहे वो क्वालिटेटिव हो, क्वांटिटेटिव हो, दैट इज 100% रिलायबल। द स्किल ऑफ द रिसर्चर बिकम्स एसेंशियल हियर। कितने अच्छे से आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो हियर इन दिस चार्ट, दिस गिव्स यू इन ब्रीफ द वेरियस types of methods by which you collect data. तो एक ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेंट, नॉन पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट मतलब कि आप यू बिकम अ पार्टिसिपेंट इन दैट ऑब्जर्वेशन, और दूसरा है कि आप दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं और बस नोट डाउन कर रहे हैं। और इंटरव्यूइंग, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अनस्ट्रक्चर्ड में है कि पहले से कुछ डिसाइडेड नहीं रहता है, आप उसी समय यू formulate questions। in structured interview में everything is structured from before। एक एक क्वेश्चन पहले से लिखा रहता है। अगर उस स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में आप सबका कैटेगराइज करके कर रहे हैं, वो कैटेगरी लिखा रहता है। सो दैट इज अ स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। क्वेश्चनेयर में आपके प्राइमरी क्वेश्चनेयर आ गया, और कलेक्टिव क्वेश्चनेयर, अलग अलग या कलेक्टिव। जब आपने डेटा को कलेक्ट कर लिया, देन कम्स द स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग द डेटा। आपके पास सारा डेटा आ चुका है, विच इज रॉ। अब उस रॉ डेटा को अगेन यू हैव टू गो थ्रू दैट। उसमें से जो आपको लगता है यू हैव टू एडिट, जो लगता है कि नहीं रिक्वायर्ड है, that you can leave, जिसमें you think कि और थोड़ा study is required, you do that, and the final stage comes the stage of analysis, when you analyze the data which you have collected। अब ये जो डेटा आपका कलेक्शन है, उसको आप किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं एनालाइज डेटा को। दैट कैन बी इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, लिख के एनालिसिस, tables के फॉर्म में, which again I think Professor Nupur Bose has told you in details, ग्राफ के फॉर्म में, या statistical representation के फॉर्म में। तो all this depends what you are comfortable with, किस स्किल में आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं। Selecting a sample,
सैंपल सिलेक्शन में अगेन आई थिंक आप लोगों को काफी कुछ बता दिया गया है. सो आपका पॉपुलेशन में से a small sample you take, जिसपे आप अपने सिलेक्ट करके उसको या तो रैंडम सैम्पलिंग कर सकते हैं या इट कैन बी अ नॉन रैंडम सैम्पलिंग. ये करने के बाद देन यू कम टू राइट योर रिसर्च प्रपोजल, विच इज ऑलमोस्ट द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स राइटिंग योर प्रपोजल. तो एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए. इस इंट्रोडक्शन में a brief literature review, आपका conceptual framework, objectives आपके रिसर्च का, क्यों आप अंडरटेक कर रहे हैं, hypothesis कि उस रिसर्च से आप क्या आपकी खोज होने वाली है, the design which you have undertaken, your sample size. I will be coming to the ethical issues involved and the data processing procedure, your tentative chapterization, limitations of your study, and your time frame. Time frame has to be, is again a very important aspect in your project writing, क्योंकि ये जो time frame है, that you can do in form of a flow chart, या for example कुछ medical research या usually scientific research, उसमें they usually make a Gantt chart for the timeline. अब हम आते हैं ethical issues in data collection. जो आपके ethical principles हैं जो आपके research को guide करता है. Justice, that research should be conducted fairly and equitably. दूसरा, beneficence, कि maximum benefit should be there to the subjects. आप research कर रहे हैं, so naturally that should have any derogatory effect. और तीसरा, should not have harmed the subjects. Or respect for the persons. Research should respect the autonomy and dignity of the individuals. आप जिसके भी interview ले रहे हैं, जिसपे भी testing कर रहे हैं, तो उनका एक anonymity होना चाहिए. It should not be revealed. Research ethics के these are the important components. पहला हुआ informed consent. Informed consent का मतलब हुआ कि the participants are fully informed about the research project. For example, if you are doing the or you are doing a research on health, and you want to see the key extreme weather conditions. Audience will be requested to make it silence. Yes, You can continue, ma'am. you're not audible. Hello. Ma'am, you can continue. Please continue, ma'am. Okay. So the participants should be made aware of what they are being researched about. क्या है उसका purpose research का, क्या उसके benefits हैं, क्या उसके risk हैं, and they should voluntarily agree to participate. That is what is informed consent. Institutional review board मतलब है कि informed consent जो है वो that should be obtained from in writing by an approved institutional review board. So in most of the universities we have a ethics committee. जो ethics committee से अगर आपका research इस प्रकार का है which is invasive, for example आपको blood test करना है, hair का test करना है, अगर आप arsenic में कर रहे हैं research, अगर आप fluoride में कर रहे हैं तो आपको bone का test करना है इत्यादि. So all that has to be passed by a ethics committee. Data sharing, that is the researchers जो अपना data उन्होंने collect किया है, that should be made available to others in a way
that it protects the privacy and confidentiality of the subjects. जैसे अगर आप उस पे वर्कशॉप भी कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं, तो उसमें you should not reveal. Privacy and confidentiality, the participants should be assured that their personal information will be confidential, anonymity will be maintained throughout the research process. And last thing, which is a very important issue, is plagiarism. This is an academic offense. आप किसी और का आइडिया अपना आइडिया बना के अगर प्रस्तुत करेंगे तो वो प्लेजरिज्म होगा. अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, दैट इज अगेन अ प्लेजरिज्म. अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं लेकिन साइटेशन आप साथ में दे रहे हैं, तो देन इट विल नॉट बी प्लेजरिज्म. अगर आप एक इंफॉर्मेशन का समरी दे रहे हैं और ओरिजिनल सोर्स नहीं शो कर रहे हैं, अगेन इट इज प्लेजरिज्म. और आप एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं जो ओरिजिनल ओनर है, जिस चीज का आप लिख रहे हैं, दैट इज प्लेजरिज्म. सो citation पे again I'm not going on the common referencing styles which has already been dealt with Professor Bose. तो ये सारी चीजों को throughout your research process, so when you are writing your project, it has to be taken into consideration. Now I conclude by saying that when you are writing a research proposal, ethical principles are as important. और finally जब आप project लिखेंगे तो आपका एक introduction होगा जिसमें you should give a background information and the statement of your problem, literature review, your methodology, कि आप design methods क्या कर रहे हैं, interview, questionnaire, आप field work, etc., results, a proper picture of your findings, conclusion. और इसके साथ अगर आपका कोई recommendation है after you conclude your research, and citation is an integral part of it and very, very important. इसके अलावा जो quality of your project writing depends on your writing communication skills and clarity of thought. ये भी बहुत बहुत अहम है when you are writing your project. How good you are able to express your thoughts and in a logical, sequential manner. तो इसमें statistical procedure जो है ये काफी मदद करता है, ये reinforce करता है, validate करता है आपके conclusion पे. But again, how comfortable you are in using statistical procedures. So this is it. And the research scholars here, happy project writing for you. Thank you so much. Thank you, ma'am. We now open our interaction session, but because of shortage of time, we'll be taking up only 2 questions. So if anyone has any query, अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो आप सवाल पूछ सकते हैं. Any question from the house? Any query? Now it seems we do not have any query regarding the lecture. I will now ask the chairperson to deliver his comments. आज के अगले सत्र में हम लोगों ने सर डॉक्टर रत्ना उन्होंने हमसे संबंधित पूर्ण बातों का रिसर्च क्वांटिटेटिव होगा या क्वालिटेटिव, और इन दोनों के बीच क्या अंतर हो, किन बातों को ध्यान में रखा जाए, इस पर इन्होंने प्रकाश डाला है व्याख्यान में. टॉपिक के चुनाव पर भी इन्होंने महत्व को समझाया है, किस तरह से चुनाव करना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए. आज के इनके व्याख्यान में जो महत्वपूर्ण बात उभर कर आई वो है लिटरेचर रिव्यू.
उन्होंने रिसर्च का वर्क को यात्रा के रूप में, जर्नी के रूप में बताया है। इस तरह से दैनिक जीवन में भी हम लोग को यात्रा करते हैं, उसकी एक तैयारी है या उसके अनुभव हम लोग अपने साथ लेके चलते हैं। तो रिसर्च वर्क में भी इससे क्या काम हो चुका है, इस पर विचार करना चाहिए और विचार करने के उपरांत ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो लिटरेचर रिव्यू रिसर्च के दौरान बहुत ही तत्व होते का है, इस पर ध्यान रखना चाहिए रिसर्च को। और डाटा जो है वह प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और कभी कभी रिसर्च में इन दोनों का भी समावेश किया जाता है। मेथोडोलॉजी पर भी ध्यान रखना चाहिए। इन सब बातों पर उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपने व्याख्यान में डाला है। मुझे उम्मीद है जितने भी शोधार्थी हैं, जितने भी प्रोजेक्ट के लिए ललायत है या प्रोजेक्ट को तैयार करना चाहते हैं, वो उनके व्याख्यान से लाभान्वित हुए होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने समय निकाला और हमारे इस कार्यशाला में अपनी उपस्थिति दर्ज की। जो गौरवान्वित हैं आपके उपस्थिति से, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much. We have come to the end of the third technical session. On behalf of Magadh University, I thank Dr. Ramdev for that lecture. I also thank all our senior faculty members, my colleagues, all the participants of this session, and the reporters of this session. Thank you. We will now move on to our third technical session. Our eminent speaker for this session is Professor Hitesh Shah, who has already joined us in an online mode. The session is going to be chaired by Professor Jamwar. I say my heartiest welcome to you, Professor Shah. Let me briefly introduce him to you. Is he online, sir? Yes, he's on. Dr. Shah is presently an associate professor and assistant director at UGC Human Resource Development Center, Kumar University, Nainital. He has 19 years of teaching experience at UG and PG levels at the Department of History, Kumar University, and has presented several papers in national and international seminars. Sir has completed 2 research projects and is actively associated with the plantation work and programs of environmental conservation. Please welcome our Honorable Vice Chancellor and the Vice Chancellor of Rama Prasad Mukherjee Vishwavidyalaya, Rajya, Professor Tapan Shandilya. Please give him a big hand. So with your permission, I'll continue. मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा सेमिनार की वर्कशॉप की कन्वीनर प्रोफेसर अहमद जहां को आए और हमारे तपन सांडिल्य सर का माननीय कुलपति श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का सम्मान करें। कविता जी प्लीज। Honorable Vice Chancellor Magadh University will felicitate Professor Tapan Sandilya. Please give him a big hand.
Our treasurer Professor Pramod Chaudhary ji will felicitate Santosh Kumar ji, sir. Professor Santosh Kumar ji. Professor Sandilya is the very pioneer Vice Chancellor and the founder Vice Chancellor of Shama Prasad Mukherjee University, Ranchi. And all of us are well connected with him on the social media, and we can see it's all kind of work for that university. रांची जाने के क्रम में सर को माननीय कुलपति जी ने कहा कि सत्कर्म किया गया है और हम सब आभारी हैं, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं सर आपकी उपस्थिति से, और आगे भी आपका स्नेह मिलता रहे हम सबों को। प्लीज गिव हिम अ बिग हैंड अगेन। मंचासीन माननीय कुलपति एसपी शाही जी, संतोष जी, निपुण जी, हमारे अर्थशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष जमुआर साहब और इस सभा में उपस्थित सभी शिक्षकगण, छात्र छात्राओं एवं मीडिया। जस्ट एक संयोग है, हम तो इसी विश्वविद्यालय के पार्ट हैं, चूंकि कॉमर्स कॉलेज में टीचर थे। मगध यूनिवर्सिटी के अंतर्गत हमारा कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट एंड साइंस महाविद्यालय हुआ करता था। मेरा लाइफ भी तो मगध विश्वविद्यालय से स्टार्ट हुआ था। बाद में कॉमर्स कॉलेज का प्रिंसिपल भी बना और अभी वर्तमान में रांची में एक नई यूनिवर्सिटी सरकार के द्वारा बनाई गई, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। वो यूनिवर्सिटी रांची कॉलेज रांची को अपग्रेड किया गया यूनिवर्सिटी के रूप में। उसी विश्वविद्यालय में अभी कुलपति के रूप में काम कर रहा। शाही जी मित्र हैं, मैंने इनसे फोन पर बात किया कि मैं भी रांची निकल रहा हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, आप यहाँ हमसे मिलकर ही आगे बढ़िएगा। मैंने कहा ठीक है। उसी क्रम में आप लोग से मुलाकात हुई। टॉपिक बहुत अच्छा है। मैं भी थोड़ा विषय से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, अर्थशास्त्र का व्यक्ति हूँ और हमेशा इंटरेस्ट रहा है कि ऐसे वर्कशॉप में शामिल हूँ और कुछ बोलूँ भी। अभी रास्ते में माननीय कुलपति शाही जी ने बताया कि एथिक्स पर ये मेन जो मेरा थीम है वो एथिक्स है। ये बहुत अच्छी थीम है। रिसर्च एथिक्स में ये वर्कशॉप जो किया गया है कि रिसर्च एथिक्स एंड प्रोजेक्ट राइटिंग। तो हम लोग इकोनॉमिक्स में भी या रिसर्च के स्टूडेंट को भी एक टॉपिक दिया करते थे, रिसर्च एथिक्स एंड प्रोजेक्ट राइटिंग या पेपर राइटिंग। पेपर राइटिंग भी हम लोग यहाँ पर करते थे। जहाँ प्रोजेक्ट राइटिंग की बात की गई, वो स्टूडेंट को, रिसर्च स्कॉलर्स को जो एकदम फ्रेश होते हैं, उनको जानना चाहिए कि रिसर्च का क्या एथिक्स है। हम लोग बहुत चोरी करते हैं। इधर बीच में पूरे भारत वर्ष में एक परंपरा चल गई थी नकल की। तो विशेषकर इस यूपी और बिहार और एमपी और राजस्थान और झारखंड के स्टेट में रिसर्च में नकल काफी जन्म ले लिया था। तो आए दिन हम लोग काफी सेमिनार भी अटेंड किए और करवाए भी कि भाई रिसर्च की क्वालिटी को होना चाहिए। एथिक्स की बात आ गई कि उसका जो है, जब तक उसके एथिक्स को पालन नहीं कीजिएगा, नकल को रोकना है। उसके लिए कई, आप जानते हैं कि हम लोगों ने कई ऐसे वर्क किए हैं इस सिलसिले में कि इस पर रोक हो सके। इस नकल पर, प्लेगिंग पर जो अभी सॉफ्टवेयर डेवलप करके थीसिस का प्रिंट जांच करते हैं, पेपर का प्रिंट जांच करते हैं। क्योंकि ओरिजिनल पेपर लिखना या थीसिस लिखना बहुत आवश्यक है, लेकिन हम देखते हैं, कई बार देखे हैं कि रिसर्च से काफी जुड़े रहे हैं कि बहुत ज्यादा प्रिंट पाया जाता है, पेपर राइटिंग रिजेक्ट हो जाता है। अगर अच्छे पेपर लिखिए आप, हमारे स्टूडेंट की ओर मेरा इशारा है कि अगर आप अच्छे पेपर एल्जेवियर में, चाहे स्प्रिंगर में, कोई केयर लिस्ट में
के जर्नल्स में आप पेपर लिखते हैं तो देखिए वो काफी मेहनत कराता है जिससे कि वो प्रिंटिंग वाली प्रॉब्लम नहीं रहे। एक एक साल लग जाता है एक पेपर को पब्लिश होने में। मैं भी स्प्रिंगर में जो पेपर या एल्जेवियर में भेजता हूँ अभी भी पति हो जाने के बावजूद मैं अपने विषय को नहीं छोड़ा हूँ। तो देखते हैं कुछ तक काफी कि टाइम टेकिंग हो जाता है पेपर को पब्लिश करने में। तो वहाँ ये ध्यान रखा जाता है कि ये रिसर्च का जो एथिक्स है उसको मेंटेन किया जाए और तभी वो पेपर लोग पब्लिश भी करते हैं। तो हम रिसर्चर जो यहाँ बैठे हैं, स्कॉलर्स बैठे हैं, उन्हीं से मैं कहना चाहूंगा कि आप ये रिसर्च एथिक्स पर ध्यान दें, नकल नहीं करें। रिफरेंस देना नकल नहीं होता है। रिफरेंस जो हम लोग देते हैं थीसिस में वो नकल नहीं है, उसको तो अलाउ भी किया गया है। लेकिन ऐसा नहीं हो कि किसी का वर्क किया हुआ और हूबहू हम भी उसी को टैग कर सबमिट कर देते हैं। तो साहिब जी ने जो टॉपिक अभी चुना है बड़ा बर्निंग इशू है। इसके माननीय कुलपति की टीम को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि रिसर्च एथिक्स और प्रोजेक्ट राइटिंग ये टॉपिक बड़ा कॉमन और सभी के लिए, चाहे वो साइंस के स्टूडेंट हो, सोशल साइंस के हो, चाहे ह्यूमैनिटीज को हो, सभी के लिए ये वर्कशॉप बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। क्योंकि बड़ी अच्छे अच्छे रिसोर्स पर्सन जैसा नाम अभी मैंने सुना, काफी अच्छे रिसोर्स पर्सन हैं जो इस पर अभी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि एथिक्स को मेंटेन किया जाए। और ये जरूरी भी है। सरकार भी सजग है, यूजीसी भी सजग है और बड़े बड़े जितने पब्लिकेशन हाउस हैं वो भी काफी सजग हैं कि हम रिसर्च की क्वालिटी और प्रोजेक्ट की क्वालिटी या प्रोजेक्ट राइटिंग का स्टाइल जो होना चाहिए, सरकार से इंफ्लुएंस होनी चाहिए। ये सारी बातें इस वर्कशॉप में डिफरेंट आपके रिसोर्स पर्सन के द्वारा अभी बताए जाएंगे जो आप लोग सभी को काफी लाभ होगा। मैं तो यूं ही ट्रिकल डाउन थ्योरी के आधार पर आपके पास टपक कर दो शब्द बोलने के लिए हाजिर हो गया। मैं माननीय कुलपति जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने ऐसे मौके पर हमारे रिसर्चर से रूबरू होने का आपने मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Honorable Vice Chancellor, sir, for your gracious words. I also thank our Vice Chancellor, Professor Shahi, for convincing you to make a stoppage over here. It's a real pleasure to have you with us today, though even if it is for a very short time. Thank you, sir. Sir, now with your permission, may I continue with the work session? Thank you, sir. Thank you, sir. We wish you a pleasant journey, sir. We had a very pleasant introduction now. We'll now again continue with the third technical session. Our guest speaker has already joined us, and I've already introduced him to you. I'll repeat once again, sir is actually a very esteemed faculty member of University of Kumaon, Nainital, and he has a teaching experience of 19 years, and sir is actively involved in environmental conservation work, and he's also a recipient of several awards, amongst which the most noted one is Raksha Raj Monthly Commendation from the Ministry of Defence, Government of India. I now hand over the dais to you, sir, to continue your lecture. Namaskar, everyone. Thank you so much. I hope I am audible. Yes, sir. Thank you. Honorable Vice Chancellor, Professor S.P. Sahi, sir, respected dignitaries on the dais, respected chairperson, Dr. Shailin Singh ji, Dr. Amit ji, and all the members of the organizing team. First of all, I would like to begin by expressing my gratitude for the invitation to the program. I truly appreciate the effort and hard work that went into organizing such event. However, due to an urgent and important assignment at my university, as the NAT team is scheduled to visit soon us, so I am not able to attend in person. So please accept my sincere apologies
for not being able to attend in person and for inconvenience caused to you. And thank you for allowing me to interact with the academician and scholars of your esteemed university in an online mode. I hope this will still enable me to participate and contribute to the program to the best of my abilities. As Dr. Salinji discussed with me, and I'd like to share my presentation with you. So here I'm sharing this presentation. I hope this is visible to you all. Is it fine? Yes, sir, it's visible. You can put your presentation in the slideshow mode. Okay, I think it is in the slideshow mode. From my side, it is showing in the slideshow mode. Is it there? No, sir, the slides are still not visible. It's not in the slideshow mode. Sir, after you start the slideshow, there will be another screen that has to be shared on Zoom. So please share the slideshow screen. All right. Right now, there is a screen. Okay. Is it fine now? Now it's visible. Now the slideshow is visible. Okay. It's visible now, sir. Thank you. Thank you so much. So I welcome you all to this visual presentation. And the title of this presentation is the ICT initiative and its uses in higher education. So what I'm going to focus on this session, update oneself with the latest development in the technology and use them for educational purposes. And you would be able to use free open source softwares and the hardwares in education. And understand and appreciate various digital initiatives of the Government of India for enriching higher education and other initiatives by the private organizations as well. And the open educational resources. I'd like to request you, please stop me when my schedule of talk is about to complete, because we can understand you need to include all the topics that you have decided for the day. Sure, sir. So I'd like to start with a quotation of Brand. It's a famous American writer. He's mentioned that once technology rolls over you, if you are not part of the steamroller, then you are part of the road. So in the last few decades, we have witnessed to several new technologies that are coming, and we are using them for the betterment or for our educational purposes as well. But some of the person and sometimes we are not able to use that. So for that, there is a small frog story. It's like a normal frog sitting in the rainforest anywhere, but it is having a genetic fluke. What he perceives and what he take actions on the basis of that perception, there is a lag of 1 second. So due to this genetic fluke, what happened when this frog sees a fly, he lunges out his tongue, and because of that lag, because of that out of date information, he misses every time. So eventually he weakened, and finally frog dies due to hunger. So the crux of this small frog story is the people who are updated in the fast changing digital era, they will survive. आप देख रहे हैं कि आने वाले जो दिन है वो कितनी तेजी से आगे जा रहे हैं. In this session, I would like to include some of the recommendations of national education policy as well. और आप में से जो फैकल्टी मेंबर्स होंगे, those are the young faculty members, उन्होंने देखा होगा कि जो कैरियर एडवांसमेंट का फॉर्म है, you will find there कि how many courses we have prepared, how many open educational resources you have created. So जो अभी जो नेक्स्ट कैरियर एडवांसमेंट है उसमें इन पॉइंट्स को भी वेटेज दिया गया है. So you need to update because we are having such a smart
clients with us because students are our clients और वो बहुत तेजी से वो चीजों को सीखते हैं, तो उन्हीं के हिसाब से हमें भी आगे बढ़ना पड़ेगा. So before I discuss on the main theme, I'd like to share something with you. So now we are calling it Education 4.0 era, where Education 1.0 was the century of experience with memorization. हम याद करते थे, चीजों को समझते थे और जो अपना लोक परंपराएं थी, उसी परंपरा में, मौखिक परंपराओं में हम चीजों को आगे बढ़ के सीखते थे. उसी परंपरा का हम लोग काफी देर तक पालन करते रहे. Then there was Education 2.0. It was internet-enabled learning. Internet-enabled learning was started in many parts of the world. Then Education 3.0 comes. It was consuming and producing knowledge. So you'll find there are so many companies, the MOOCs, the companies those are working on MOOCs, the companies those are working on open educational resources. There's so many online platforms were there. Those were using Education 3.0. And now it's a time for Education 4.0. It's about empowering education to produce innovation. कितने innovative तरीके से आप चीजों को आसान कर सकते हैं, basically शिक्षा के संदर्भ में. So Education 4.0 is talking about that. And why we need this Education 4.0? Because from this picture you can understand that the first thing that was started 1.0, it was agricultural economy during the 19th century. Then industrialized economy in the 19th century. Then knowledge economy was in the 20th century, and we are here in the 21st century with innovation society. So that is why there is a need for Education 4.0 framework, and according to that we need to work upon it. Here I would like to show you data of 2016. In 2016, you can see this small model. Here, in 16, it was studied that the tsunami impact of ICT on professionals of higher education. But we started it a little bit late after the Corona period. So we are on to using ICT initiative after Corona, but the things were changed in other part of the world. The learning internet with the students, with student and teacher interaction, and the internship programs, they were using these ICT tools. Here I'd like to share something with you that is very interesting. From this picture you can understand it. जो हमारा टेलीफोन होता था पुराने जमाने का, जिसमें डायल करते थे हम TNT जो होता था, मार्टिन कूपर ने जब मोबाइल फोन लॉन्च किया था उससे पहले, that basic telephone that took 75 years to reach 100 million customers. वर्ल्ड वाइड वेब को सिर्फ 7 साल लगे. और आप आगे जाके देखें अगर फेसबुक, इट्स अ वेरी पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इट टुक 4 years. फिर इंस्टाग्राम आया, उसको 2 ही साल लगे. एंड पोकेमॉन गो वाज अ पॉपुलर गेम, उसको 1 ही महीना लगा 100 मिलियन कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए, क्योंकि बच्चे खेल रहे थे, यूथ खेल रहे थे. तो आप देखिए कि टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से हमारी लाइफ को इन्वेड कर रही है, एंड इट हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. हम में से शायद कोई भी अपने मोबाइल के बिना कल्पना नहीं कर सकते अपने एक पूरे दिन की. सो देयर इज ह्यूज चेंज इन दिस टेक्नोलॉजी थ्रू दिस हार्डवेयर. इन द फर्स्ट पिक्चर, इन द ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर, यू कैन सी द वैक्यूम ट्यूब. जो पहला कंप्यूटर बना था ENIAC, it was made of 17,468 वैक्यूम ट्यूब्स. तो उस ट्यूब की वजह से वो दिखता था पहला कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर की तरह आज के. इट वाज अ ह्यूज मशीन बट वाज एबल टू कैलकुलेट अ वेरी बेसिक थिंग्स. उसके बाद दुनिया थोड़ा आगे बढ़ती है एंड वी मूव टुवर्ड्स द ट्रांजिस्टर्स. ट्रांजिस्टर ने कंप्यूटर के साइज को थोड़ा छोटा कर दिया, इसीलिए जो रेडियो बहुत बड़े साइज का होता था, we know it from other name also, ट्रांजिस्टर. रेडियो को हम ट्रांजिस्टर भी बोलते हैं क्योंकि वो ट्रांजिस्टर एक आसान रूप में हम लोगों तक पहुंचा एक टेक्नोलॉजी के तौर पे, और वो सर से या गेस्ट अपने रूम से वो लोगों के कंधे तक पहुंच गया.
because of these transistors. Then we move towards the integrated chip, IC circuit, और इस IC circuit ने computers को lab तक पहुंचाने में आसानी की. Then the Pentium chips, जिसमें कि 3.3 million transistors होते थे, जिसने ट्रांजिस्टर को रिड्यूस किया, और इस पेंटियम चिप ने अब कंप्यूटिंग को बहुत आसान बना दिया. Then now at presently we have the fastest chip, that is i7, core i7. It is having a speed of 2.66 gigahertz core speed. तो इसके बाद कंप्यूटिंग बहुत आसान हो गई, और वो हमारे मोबाइल फोन्स तक जाके पहुंच गई है. तो now we require our mobile phone for doing so many things and related to gain knowledge and to spread it also. So I would like to share something with you in the light of new education policy or the national education policy. So national education policy is talking about artificial intelligence and machine learning. Then it's talking about the blockchain technology that will be used in higher education. Then the gamification. The gamification will be used, use of game design element in non-game context to motivate and engage students. Then what VR and AR, virtual reality and augmented reality. These technology are being used in higher education to create immersive and interactive learning experience. And then the learning experience platform. So many universities and organizations, they are having LMS, learning management system. But now we will be having a learning experience portal. LXP is with us. So learning experience platforms are software program platforms that provide a personalized learning experience to students. And they will use artificial intelligence and machine language as well. तो ये जो बहुत टर्म जो बहुत कठिन लगते थे, जो सिर्फ कंप्यूटर साइंस फिजिक्स के लोगों के लिए होते थे, नाउ दे विल बी यूज्ड बाय द एंड यूजर, जो अभी हम लोग हैं, जो हमारे जो नॉन एक्सपर्ट्स हैं. सो ये टेक्नोलॉजी बहुत आसानी से हम तक पहुंच रही है. एंड नाउ विल बी यूजिंग द प्रेडिक्टिव एनालिसिस एज वेल, और जो डेटा माइनिंग के लिए है, मशीन लर्निंग के लिए है. इसके अलावा predictive analysis is being used in higher education to improve student retention rate and student success also. तो predictive analysis की तरफ भी हम लोग मूव करने वाले. And the robotic process. Already Government of India ने robotics को लेके कई initiatives लिए हैं. I'll be discussing it in length in the next part. तो ये सारी की सारे जो नए इनिशिएटिव हैं, इनकी बात NEP 2020 में की गई है, और जल्दी ही हम लोग इनसे हमारा साबका इनसे बढ़ने वाला है. I would like to share something that was discussed in somewhere in 2002. आज से 20-21 साल पहले. According to UNESCO, the measuring ICT in education is therefore important to inform policymakers in setting national priorities and developing ICT in education policy. UNESCO इस बात को फोकस कर रहा था कि वो पॉलिसी मेकर्स के पास इसको लेके जाए और आईसीटी को एजुकेशन पॉलिसी में लेके. उसका इम्पैक्ट ये देखने को मिलता है कि अब धीरे धीरे इंटीग्रेशन आपके आईसीटी में, आईसीटी का पॉलिसीज एजुकेशन पॉलिसी में स्पेसिफिकली हो रहा है. कोविड पीरियड में हमने इसको शुरू किया था, और उसके दोनों एस्पेक्ट थे. ईच कॉइन हैज टू साइड्स. कोविड ने बहुत से लोगों को छीना भी, लेकिन कुछ हमें नया भी देखे गया. सो इफ इन टर्म्स ऑफ इंडियाज ICT uses, it's a paradigm shift phase, and that pandemic has made us more aware to modify our education system. And the digital media in education is the use of that interactive and multimedia in the classroom setting. Then digital media involves integrate multiple digital softwares and multiple digital devices and the platforms as a tool for learning. Then the digital media allow people to showcase their work to social media platforms also. आप में से बहुत से लोगों ने काम किया होगा. आप लोगों ने Facebook पे, आप लोगों ने YouTube पे बहुत से प्रोग्राम दिए, बहुत लोगों ने बहुत से काम किए. And they showcases their work, जो उन्होंने काम किया था और आज भी लोग कर रहे हैं.
So digital media or the uses of ICT in higher education is the mode of education that use information and communication technology, because ICT stands for that. For what? It is for it is to support the delivery of information. क्योंकि teacher का सबसे important काम is delivery of information है, and ICT is there to support it. ICT is there to enhance the delivery of information and as well as to optimize the delivery of information. तो ICT से हम teachers काफी कुछ बेहतर बना सकते हैं अपनी pedagogical skills को. So this can lead to an improved learning and better teaching method, or you can say we can create a better teaching learning environment. So there are so various devices and technologies are there. So access of course material through remote devices. We have so many online digital repositories for lectures, course material, and digital library for our research purposes also. There is online and cloud-based academic management system that can be used. In fact, we can use the flipped classroom concept, where we can use online, offline mode simultaneously. And this can be happen with the use of handheld computers. Handheld means the smart devices that you're using as the mobile phones, computers, audio players, projector devices, and as so many things are there. So why major digital media in education? क्यों जरूरत है ICT? So enhancing learning experience and excuse me. So it is for enhancing learning experience and providing new set of skills. Then we can reach more students with massive open online courses, facilitating the training of faculties, and by this program we are doing it here. It minimizes cost and saving time associated with information delivery and automating regular day-to-day tasks as well. So digital media is a learner-centric, and its content allow learner to access content on their own terms. So in the future, the content will be available even on more devices. आप देख रहे हैं कि ये भी बहुत devices are now. It's a time for wearable devices. आपके smartwatches become really smart. वो बहुत से काम आपके लिए कर रही है. And in the near future, you will be using Google Lens, Google Glass, and Microsoft Lens, and many other companies are working on that, on the virtual reality part and augmented reality part, and we'll be having such wearable technology with us. So here I'd like to show a data with you. It's an evolution of digital media and education. इस slide को मैं नीचे से पढ़ना चाहूँगा आप लोगों के लिए. In other part of the world, the computer-assisted instruction was started in 1960. और 1960 का वो दौर था जब टेक्नोलॉजी के नाम पे हमारे पास रेडियो हुआ करता था. I'm talking about the common people. Then the computer-based learning was started in other part of the globe in 1980s. और ये वो समय था जब हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता था. फिर एजुकेशन टेलीमेटिक्स स्टार्ट हुआ 1988 में, and 1982 the first color television was introduced to India. Then computer mediated learning was started in 1990, and the term online education, e-learning, open learning, such terminology was used in other part of the world in the mid part of 90s. और ये वो समय था जब हम पेजर टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे, जो पूरी दुनिया से आउटडेटेड थी. उस पेजर का इस्तेमाल हम इस वक्त कर रहे थे. In 1999 the virtual universities were started in other part of the world, और यहाँ पर हम लोग जीमेल भी एक रेफरल से हमें मिलता था. जीमेल पे आप डायरेक्ट अकाउंट नहीं ओपन कर सकते थे. Then the LMS learning management system was started in 1999 itself. Then virtual campuses were started, and the important thing, massive open online courses, they were started in 2008. और हम लोग अब जाके उसका ठीक से इस्तेमाल कर पा रहे हैं, और आने वाले दिनों में हमको उसका और इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये अब आपके कैरियर प्रमोशन से जुड़ा हुआ है, आपके एजुकेशन के एनहांसमेंट से जुड़ा हुआ है.
So NEP is talking about the use of technology with equity. Ritesh, sir, Please. request you to please conclude within 5 minutes, sir. Okay. So here the impact of higher education, and I'd like to mention that in NEP is saying that the virtual world become more real than the real world with the digital and video centric approaches. So here I'm skipping it. And so recently UGC launched a quality mandate, a 10-point quality mandate. And in 10-point quality mandate, it was mentioning about the use of ICT-based learning tools for effective teaching learning processes. So what these are? So Government of India has taken so many initiatives in higher education. Here I'd like to share it with you. As you are aware of SWAM, it's acronym of Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds. Here you can create your own SWAM courses through 4-quadrant approach. And SWAM, it can be used in the regional languages, जहाँ हमारे हिंदी भाषी या अन्य भाषी जो स्थानीय भाषा के जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनके लिए we can use the courses in SWAM in the regional languages as well. Another initiative is CEC. It was established in 1991. और CEC जो है अभी it's a inter-university center set up by the University Grants Commission, जहाँ से आप research के लिए और teaching के लिए you can in fact for your MOOCs and SWAM courses you can use so many things. Another very important initiative is SWAM Prabha. It's a quality high quality educational channel. There are 34 high quality channels. इसमें आप देखें कि there are packages, there are some bouquets. इसमें आप देखें कि एक वागीश है जिसमें humanities, language and literature से related videos हैं. संस्कृति में हिस्ट्री, कल्चर, फिलोसफी है. विधिक में लॉ है, लीगल एस्पेक्ट्स है. तो जब आप इसको क्लिक करते हैं तो स्वयं प्रभा में यू कैन फाइंड इट कि आपको यूजी के लिए देखना है, पीजी के लिए देखना है, क्या सब्जेक्ट आपको चूज करना है. सपोज आपने हिस्ट्री चूज किया तो यू विल फाइंड सो मेनी थिंग्स आउट हियर. आप देखें कि 32 कोर्स मटेरियल अवेलेबल थे पीजी के लिए और मोर देन अराउंड 4000 फॉर पीजी यूजी कोर्सेज. उसके बाद आप फर्दर क्लिक करने के बाद उसमें आप कोर्सेज को ले सकते हैं. तो इन कोर्सेज को क्लिक करके यू कैन शेयर इट विद योर स्टूडेंट्स एंड यू कैन एनहांस योर नॉलेज एज वेल एज आप इनका रिसर्च में भी यूज कर सकते हैं. देन एनडीएल, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, यहाँ पर आप एक क्लिक में 3 करोड़ से ज्यादा डिजिटल रिसोर्सेज को देख सकते हैं. फॉर दैट यू नीड टू लॉग इन. और जो कंटेंट है इट कवर ऑलमोस्ट ऑल द मेजर डोमेन्स ऑफ एजुकेशन एंड ऑल मेजर लेवल्स ऑफ लर्नर इंक्लूडिंग लाइफ लॉन्ग लर्नर्स. यहाँ पर आप बुक्स, ऑडियो बुक्स, लेक्चर, वीडियो लेक्चर्स, प्रेजेंटेशन, नोट्स और सॉल्यूशंस भी ले सकते हैं. इस तरह से इसका पैनल है, तो यहाँ से आप इसको ले सकते हैं. देन द स्पोकन ट्यूटोरियल, इट्स डेवलप्ड बाय आईआईटी बॉम्बे. ये these are the 10-minute long audio video tutorials on open source software to improve employment potential of students. इसका इस्तेमाल आप जो आपके जो कोर्सेज हैं उसमें भी आप कर सकते हैं and you can use them for your self learning also. Then the FOSSE, it's a free and open source software for education. तो FOSSE में क्या क्या आप देख सकते हैं. there is Scilab जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं. पाइथन में आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं. इनफैक्ट आर जिसको कि आप यहाँ से डायरेक्टली लेकर के स्पीचेस अगर आपके पास नहीं है तो यू कैन यूज इट. आर यहाँ पर आप अपने क्वालिटेटिव एनालिसिस को आप कर सकते हैं. देन QGIS, आप GIS मैपिंग के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. सो अंडर FOSSE देयर आर सो मेनी softwares that can be used by the academicians. Then we have a virtual lab. Our virtual lab में what we can do, here is a environment for perform experiments. You can collect data for your research while using virtual lab. And all the major organizations or all the major IITs are connected with this. They are developing so many things. Then the E-Yantra, another lab setup initiative by IIT Bombay. Those who are working on robotics, they can use it, especially the person from physics and other subjects, they can use it. Then the E-PG, E-Pathshala, जो B.Ed के अपने टीचर्स हैं उनके लिए इसको CIT NCERT ने इसको डेवलप किया है. और यहाँ पर आपको एजुकेशनल रिसोर्सेज फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगे.
Then we have a EPG Pathshala, another very important thing. EPG Pathshala जो है the Government of India का initiative है under NMEICT. And here you'll find more than 70 subjects across all the disciplines of social sciences, arts, fine arts, humanities, and natural and mathematical sciences as well. तो EPG पाठशाला में ढेर सारे कोर्सेज हैं. दे आर फोकस. आप देखिए कि हियर इज अ रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स. यू नेम इट एंड यू विल फाइंड इट. तो ये स्पेसिफिकली फोकस है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए. जो सिलेबाई आपका है उसके अकॉर्डिंगली ये प्रिपेयर किए गए. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20,000 प्लस ई टेक्स्ट हैं, वीडियोस हैं, द सब्जेक्ट पेपर्स हैं EPG पाठशाला में. ये अध्ययन इसी का एक पार्ट है. और ई अध्ययन इज अ प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड 700 प्लस ई बुक्स फॉर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स. तो उन पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स को डायरेक्टली फोकस करने के लिए ई अध्ययन है, जहां पर आप यूजी और पीजी कोर्सेज के लिए बुक्स आपको मिल जाएंगी ऑनलाइन. इनफैक्ट यू विल हैव अ वीडियो कंटेंट एज वेल. देन यूजीसी मूक्स भी हमारे पास है ऑनलाइन कोर्सेज करने के लिए. ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है. देन ई पाठ्य. ई पाठ्य जो है वो वर्टिकल है एक तरीके से EPG पाठशाला का. तो EPG पाठशाला में जो सॉफ्टवेयर ड्रिवन कोर्स है, जो पूरा कंटेंट पैकेज है, वो आपको मिल जाता है वहां पर हायर एजुकेशन में PG लेवल के लिए. और कैंपस लर्निंग मोड में भी इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं ई पाठ्य, बिकॉज यू विल हैव ऑफलाइन एक्सेस टू इट. आपने एक बार ई पाठ्य ले लिया तो आप इसको ऑफलाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ई सोच चंदू. रितेश सर, please conclude within 5 minutes. अभी सर जैसे बात कर रहे थे कि वी शुड हैव अ गुड पेपर्स इन स्ट्रिंजर and Springer Nature and other journals. So it is first we need to understand that. So for that, E-Shrot Sindhu is there, and from there you can have more than 10,000 core and peer-reviewed journals. उसको आप देख सकते हैं. There is a E-Gyan Kosh. Then in E-Shrot Sindhu you can have 10,000 plus e-journals, जहाँ पर आपके पास सारे जर्नल की एक्सेस है through your central library. So go use them and publish a paper in quality journals according to the guidelines. और आप देख सकते हैं कि here is a शोध गंगा, जिसमें आपके सारे थीसिस जा रही हैं. अभी यूजीसी ने एक शोध शुद्धि स्टार्ट किया है, where they are providing you a software original. Earlier it was Urkund. तो इसके जरिए आप अपने प्लेजरिज्म चेक कर सकते हैं. आप अलग अलग वेबसाइट पर जाके ना करके आप सीधे उर्कुंड पे जाके चेक करिए. आप ओरिजिनल पे जाके चेक करेंगे तो जो आपके पास फ्रीली अवेलेबल है. इफ नॉट देन यू कैन कॉन्टैक्ट टू इन्फ्लिपनेट, योर इंस्टीट्यूशन में कॉन्टैक्ट इट, और वहां पर आप ओरिजिनल से अपने पेपर्स को आप खुद से चेक करके देन यू कैन सेंड इट टू द रेफरीज. देन वी हैव अ शोध चक्र. इट्स अ न्यू इनिशिएटिव. इसको अभी 1 साल भी नहीं हुआ लॉन्च हुए. Here university can have a MOU with Inflipnet and UGC, जहाँ वो रिसर्च प्रोफाइल को चेक कर सकती है, जहाँ रिसर्चर को ढेर सारी फैसिलिटीज उसमें मिल रही हैं, जहाँ वो अपना खुद का स्पेस क्रिएट कर सकता है. वहाँ पर उनके पास एक रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम है जोटेरो, और बाकी सोच सिद्धि भी उनके पास है. तो सोच चक्र से यूनिवर्सिटी, रिसर्चर और गाइड तीनों को एक लूप में लेके तीनों की प्रोग्रेस भी देख सकती है. देन समर्थ पोर्टल बहुत जल्दी आप लोग यूज करने वाले हैं, और बहुत सी चीजें हम समर्थ पोर्टल के थ्रू ही करेंगे. एडमिशन से लेकर के आपका कैश, और आपकी छुट्टियों से लेकर के आपकी डे टू डे रिकॉर्ड्स. So yeah, and NPTEL is another important source where you can have your open educational resources from. Like there are 56,000 hours of video content that can be used to create your own OERs. So here I was talking about something, and I have to touch it because in half an hour it is very difficult to talk about it. Just 2 things I would like to discuss with you. And these are some open source hardwares also. So Arduino and Raspberry Pi, ये 2 छोटे-छोटे हार्डवेयर सिस्टम है जो कि बहुत सस्ते में मिल जाते हैं, 360 रुपए से लेकर के 4,000 रुपए तक के. तो इन हार्डवेयर्स का इस्तेमाल भी, जहाँ बहुत ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है जिन सेंटर्स पे, वहाँ पर इनका इस्तेमाल करके IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से हम अपने स्टूडेंट्स तक बहुत सी चीज़ें पहुँचा सकते हैं. बहुत से एडवांटेज हम जो ICT इनिशिएटिव है उनके जरिए हम उन तक पहुँचा सकते हैं. और अगर फिर कभी मौका मिला तो विल टॉक ऑन OER कॉमन्स. However, I have already shared abstract of my
presentation with Shalin ji. He can share it with you. So here I'd like to, because we have a very limited time, so I'd like to say that in conclusion, that ICT initiatives have transformed the landscape of higher education and making learning more accessible, engaging, and personalized. Education and educators and students must stay updated with the latest development in technology and use them effectively in enhance the quality of education with free and open source softwares, hardwares, digital initiatives of the Government of India, and open education resources. They are available at OER Commons. Are some of the key aspects of ICT in higher education that can signify improve the teaching learning experience of the students as well as the learners or academicians. So here I hope I could complete in the given time, and if you have any question, then you can ask. Thank you, sir. Thank you so much. Please proceed. Thank you, sir. I now request our chairperson to deliver his comments. In very brief, sir. आज के प्रथम सत्र में तीसरे वक्ता के रूप में हम लोगों ने कुमायूं विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रितेश शाह को सुना। उन्होंने अपने व्याख्यान में शोध के क्रम में टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका हो सकती है इस पर उन्होंने प्रकाश डाला। शोध कार्य करने में बहुत सारे स्रोतों से डाटा और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है और उसके स्रोत जो है वो काफी विस्तृत है, बहुत फैले हुए हैं। टेक्नोलॉजी जो है वह हमें इसे सरल बनाता है, वेब पेज के द्वारा, मोबाइल ऐप के द्वारा, या फिर ई पाठ, ई शोध सिंधु या ई शोध चक्र, इन सबों के बारे में इन्होंने बताया है, जहाँ से हम लोग अपने शोध से संबंधित आंकड़ों का या उस पर जो लिटरेचर है उसका हम संग्रह कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं और अपने रिसर्च को सरलता से पूरा कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती वक्त हमारे कार्यशाला के लिए निकाला, इसके लिए हम आभारी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you for providing this opportunity. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you for being with us today. We will now move on to the next technical session. For the fourth technical session, I invite our patron, Honorable Vice Chancellor, sir, to please come up on the dais and take a seat. I also invite our esteemed speaker to come up on the dais, Professor Vinod Kumar Jha. I request Professor Suniti Suman, Professor PG Department of Psychology, to felicitate our guest speaker, Dr. Vinod Kumar Jha, with mementos in Magadh. Professor Vinod Kumar Jha is associated with the Department of Political Science, AL College, Patna. His area of academic interest are Indian politics, comparative political analysis, and political economy. He has several national and international publications and has attended conferences globally, including one at Bali, Indonesia.
He has worked as district coordinator for National Child Labor Program Evaluation of B.V. Giri Institute of National Labor, Noida, under Ministry of Labor and Social Welfare, Government of India. He is associated with prestigious professional academic bodies across the nation. Magadh University is elated to have you with us. I extend a very warm welcome to you, sir, and invite you to the podium to deliver your lecture. Zoom करो, सागर zoom करो. Good afternoon. First of all, I must say I am really thankful to our Vice Chancellor sir and the organizing committee who have given me this opportunity. I really feel honored. Good afternoon. जितने भी मेरे कलीग हैं, जो हमारे स्पीकर हैं, हमारे कॉलेज के हैं, नूपुर मैम है जिन्हें मैं देख रहा हूँ, मेरे मित्र पुराने खान साहब हैं. Khan is of course Khan, but he is not a terrorist. Anyway. So now, ये कल मैं जूम से भी देख रहा था, किसी मगध यूनिवर्सिटी से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं जूम पे भी देख रहा था कि इनॉग्रल फंक्शन देख रहा था. कल से ही मैं देख रहा हूँ कि एथिक्स पे काफी ज्यादा बातें हो रही हैं. और ये इज नॉट ए कोइंसिडेंस कि जब हम अनएथिकल होते हैं तो ज्यादा एथिक्स की बात करते हैं. जब हम बिहार में हम बहुत धूमधाम से सरस्वती पूजा मनाते हैं, क्योंकि यहाँ पढ़ाई लिखाई पर कम ध्यान दिया जाता है. बंगाल में ऐसा बोला जाता है कि बंगाली कमजोर होते हैं. सॉरी, आई एम नॉट, मतलब इज नॉट ए रिमार्क्स, मतलब इज रियल नॉट ए रीजनलिस्टिक रिमार्क, बट ऐसा होता है कि जब बंगाल में हम जाते हैं तो वहां पे शक्ति की आराधना काफी ज्यादा होती है. मेरे ख्याल से यही चीज यहीं पे आ गया है. आई विल स्टार्ट विद टू डिक्टम्स. फर्स्ट, इफ आई एम नॉट ए पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन देन आई मस्ट बी ए पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम. अगर हमारा जो प्रॉब्लम है एथिक्स का, उसमें अगर हम कुछ योगदान नहीं दे सकते हैं, उसमें सुधार नहीं ला सकते हैं, ये जवाबदेही मेरी है. केवल ये कह देने से कि हमारे बच्चे चोरी करते हैं, हमारे बच्चे अनएथिकल हैं, ये गलत है. नाउ दिस लीड्स टू द माय सेकंड डिक्टम. एक आपने कार्ल मार्क्स का नाम सुना होगा. उनका एक फेमस लाइन है, थीसिस ऑन फ्यूर बैक पे. उन्होंने वहां पे लिखा है, इन दिस चेंज सर्कमस्टांसेस डॉट डॉट डॉट, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट ऑल द पैराग्राफ. ठीक है, द टीचर मस्ट हिमसेल्फ बी एडुकेटेड. हमारा जो ये एथिक्स का इश्यू है, हम जो ये जो हमारा प्लेगरिज्म का है, ऑफ कोर्स ये हम प्लेगरिज्म पे ही अपने आप को कॉन्फाइन रखेंगे. और वन थिंग आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई बिफोर आई स्टार्ट माय डिलीवरी, मैं नया कुछ भी नहीं कहने जा रहा हूँ. ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप नहीं जानते हैं, आप सब कुछ जानते हैं. आपके अंदर वो चीज दब चुका है, चाहे प्रॉब्लम है, चाहे जो भी इश्यू हो, वो आपके अंदर वो दब चुका है. और हम यहाँ यही करें कि आधा घंटा में अगर कुछ बोल के आपके अंदर कुछ हम जगा सके, ये मेरा डिलीवरी का ये पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा. एक जस्ट मैं एग्जांपल देता हूँ कि हमारा जो भी रिसर्च होता है, उसका हम मेथड कैसे अप्लाई करते हैं. हमें सही मेथड बतलाया ही नहीं जाता है. मैं अपना यहाँ जो भी शेयर कर रहा हूँ, मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय में एज ए स्टूडेंट और एज ए टीचर दोनों रहने का सौभाग्य मिला. और आई एम रियली कंसीडर माई सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट बिकॉज आई हैव बीन टॉट बाय प्रोफेसर रणधीर सिंह, आंद्रे वेते, रामचरण शर्मा, डीएन झा, सुमित सरकार एंड ऑल द बिग शॉट. इसलिए मैं जो भी थोड़ा बहुत शेयर करूंगा उन्हीं का है, बिकॉज एवरी स्टूडेंट इज द रिप्लिका ऑफ हिज टीचर ओनली, नथिंग एल्स. मेरा अपना इसमें कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है. तो जैसे आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल, एक सोशल फेनोमेना है, एक जो बार बार यहाँ बिहार में देखते हैं कि मलेरिया आ गया. तो देयर आर बेसिकली टू पैराडाइम्स. वन इज द सिस्टम अप्रोच, और यहाँ जितना भी देखते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, साइबरनेटिक्स, ऑल द बिग थिंग्स, ये ऑल रिलेटेड विद द सिस्टम अप्रोच जो हम मैक्स वेबर से डिराइव करते हैं. अदर इज द डायलेक्टिकल अप्रोच जो हम कार्ल मार्क्स से लेते हैं. नाउ आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल. अगर मेरे पास मलेरिया है, तो मलेरिया का जो हमारे सरकारी जो हमारे ऑप्शन है, जो वो पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं, जो हम सिस्टम में अडॉप्ट करते हैं टू मेंटेन द सिस्टम. मलेरिया है, हम उनका एग्जांपल देंगे, चलो भाई मलेरिया क्यों हुआ, दे विल सिंपली आस्क, चलो मच्छर हो गया, इसके कारण हो गया. बट दिस इज नॉट द सॉल्यूशन. अब मच्छर को हम कैसे मारेंगे, तो डीडीटी का छिड़काव करके, ठीक है, उस दिन के लिए मच्छर मर जाएगा, लेकिन मच्छर हमेशा के लिए नहीं मरेगा. और ये जो प्रॉब्लम है उससे आप निजात नहीं पाएंगे, वही आपका प्लेजरिज्म है. ठीक है, नाउ आई एम कमिंग टू द डायलेक्टिकल मेथड.
डायलेक्टिकल मेथड विथ टोटलिटी। अब यहाँ क्या है कि हम अगर देखते हैं कि मलेरिया है, किस वजह से हुआ है? मच्छर की वजह से। मच्छर क्यों है? गंदगी की वजह से। गंदगी क्यों है? झुग्गी झोपड़ी की वजह से। झुग्गी झोपड़ी क्यों है? पॉवर्टी की वजह से। नाउ पॉवर्टी इज द बेस and malaria is the superstructure. If you remove the base, superstructure will collapse. This should be the our methodology जो हमेशा हम लैक करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारा जब तक मेथड सही नहीं होगा, हमारा जो रिसर्च का कंक्लूजन होगा वो सही नहीं होगा। सेकंड थिंग, कुछ इंसिडेंट हुए जिनको मैं आपको, WTO बना, उसके बाद गैट आया। 2015 में भारत सरकार वाज वन ऑफ द सिग्नेचरीज। उसके बाद क्या हुआ कि हमारा जो एजुकेशन था वो वेलफेयर सेक्टर से, सोशल सेक्टर से निकल के सर्विस सेक्टर में आ गया। 2015 के बाद से सर्विस सेक्टर में आ गया। इसका ढेर सारा इंप्लीकेशन है, वो इंप्लीकेशन मैं इस मंच से नहीं बोलने जा रहा हूं, ठीक है। लेकिन 2015 में हमने गैट पे साइन किया था उर्वे राउंड में, और उसके बाद 2016 में हिंदुस्तान का पहला IPR एक्ट आया। इट वाज नॉट ए कोइंसिडेंस। और 2017 में दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट था, काफी इंटरेस्टिंग था। जब हम लोग वहां पढ़ते थे तो वहां एक डी स्कूल होता है, डी स्कूल मतलब दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। उसके अंदर एक बहुत अच्छा लाइब्रेरी है, रतन टाटा लाइब्रेरी। वहां हम लोग, वहां क्या होता है कि जो भी अच्छी अच्छी किताबें आती हैं, अच्छी किताबें जनरली महंगी ही होती है। वहां क्या होता था, तो वहां एक छोटा सा ये था, क्या नाम है, फोटो कॉपियर वाला था। वो उनको कॉपी करके हमें देता था। जितने भी पब्लिशर थे उन लोगों ने उस पर केस कर दिया, कहा कि ये तो गलत हो रहा और ये हमारा जो है बिजनेस इंटरेस्ट हैम्पर कर रहा है। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो, दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके फेवर में जजमेंट दिया, कियोस्क वाले के फेवर में जजमेंट दिया। ये 2017 की घटना है। अभी 27-30 साल से नौकरी कर रहे हैं, एंड इट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग कि अब हमें बायोमेट्रिक लगाना पड़ रहा है। व्हाट वाज द रीजन? व्हाट वर दोस फोर्सेस दैट कंपेल्ड आवर एडमिनिस्ट्रेटर टू कम आउट दिस ड्रैकोनियन लॉ? क्या फोर्सेस था? हमें ट्रस्ट डिफिसिट आया। हम केवल बच्चे को ही कहते हैं कि नहीं तू आ रहे हो, तू चोरी कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे। हम केवल बच्चे को कहते हैं तुम पढ़ नहीं रहे हो, बट व्हाट द हेल वी आर डूइंग? क्यों लगाना पड़ता है बायोमेट्रिक हमें? 27 साल में तो नहीं लगाया, हम 28वें साल क्यों लगा रहे हैं? So these are the points. ये now coming back to my old hypothesis, teacher must himself be educated. अगर हम नहीं अच्छे हैं तो हमारे बच्चे अच्छे नहीं होंगे। सरकार ने टिकटॉक बंद कर दिया 2 साल पहले, ठीक है, सरकार ने टिकटॉक बंद कर दिया, लेकिन ओपन सॉरी एंट्रिंग ये ले आया। क्या हम ये नहीं समझ रहे हैं कि ह्यूमन, जिस तरह से ह्यूमन राइट्स कॉन्सेप्ट लाया गया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा, ये वेस्टर्न इंपीरियलिस्ट फोर्सेस के द्वारा, कि जिसके प्रिटेक्स्ट में अमेरिका जो है जिस कंट्री में मन होगा उस कंट्री में जाके दादागिरी करेगा, क्या उसी तरह ये प्लेजरिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं लाया गया है? क्या उसी तरह से यहाँ पर ट्रिनिटी, क्या नाम है सर, I think no problem will rectify it. There is the one, it's a very costly, recently it has been launched by US government. Trentin या Trentin ऐसा ही कुछ नाम है। Trentin हम लोग को वो कॉमिक याद है। There is one, वो और तुम, क्या आपको नहीं लगता है कि जिस समय आप ऑनलाइन चेकिंग के लिए देते हैं तो आपका सारा डेटा अमेरिका चला जाता है? टिकटॉक से आपका डेटा अमेरिका जाएगा, तो क्या ट्रिंटिन और इससे और तुम से नहीं जाएगा? तो क्या वो हमारे ऊपर टैग नहीं रख रहे हैं हमारी रिसर्च के ऊपर? इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। हर समय हम स्टूडेंट को कहते हैं, आई वॉज क्वाइट सरप्राइज जब हम दिल्ली छोड़ के यहाँ आए थे। मेरा एक बच्चा था, उसको बोला कि भैया चलो जमा करो अपना, वो पहला दिन जो बोला, लीजिए सर मेरा सिनॉप्सिस तैयार हो गया, अब हम जा रहे हैं जमा करने, PhD करने के लिए। आई वॉज सरप्राइज। बोली सिनॉप्सिस क्या होता है? कि पहले तू रिसर्च प्रपोजल देगा। बोला कि नहीं सर हमारे यहाँ सिनॉप्सिस से ही शुरू होता है।
इट वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग कि यहाँ पे सिनॉप्सिस सही शुरू होता है। मैं इन सब बातों को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वाइस चांसलर साहब यहाँ मौजूद है, ये इन सब बातों को ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ हम ये भूल जाते हैं कि हमारा जो कैचमेंट एरिया है, मगध यूनिवर्सिटी में ब्लडी दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम टेक्सास एंड मैनहट्टन, वो न्यूयॉर्क से नहीं आ रहे हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम नदवा, नदौल, अररिया, फारबिस ब्रिज। हमको उनको भी देखना होगा कि भैया वो जो आए हैं शुरू से डिप्राइव्ड रहे हैं, उन्होंने उस स्कूल में शिक्षा प्राप्त की है जहां पर 15 मास्टर के बदले 5 मास्टर था। हमें उनका भी ख्याल रखना होगा कि हम कैसे उनको बेहतर बना सकें। साथ ही साथ दूसरा चीज आता है, जब हमारे बच्चे रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं पीएचडी के लिए, तो पहला उनका डिमोटिवेशन का फैक्टर वहीं से स्टार्ट हो जाता है। वो ऐसे स्टार्ट होता है कि जब वो अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, देखते हैं कि सामने में 300 आदमी ऑलरेडी पीएचडी करके घूम रहा है, उनको नौकरी नहीं लगी है। ये जो हमारा पहला जो यूनिवर्सिटी का लीकेज मॉडल था, देयर इज अ वेरी फाइन आर्टिकल बाय डेविस कपूर एंड भानु प्रताप मेहता, वो हार्वर्ड वालों ने अपना निकाला था हायर स्टडीज पे, काफी अच्छा है उसमें, कि व्हाट वी लैक, कि हम लोग यहाँ जो है कि वो लिंकेज मॉडल जो था यूनिवर्सिटी सिस्टम का, वो धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है, या तो खत्म हो रहा है या तो खत्म किया जा रहा है। और कोई भी यूनिवर्सिटी सिस्टम जो गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है तब तक सरवाइव नहीं करेगा जब तक कि मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास का सपोर्ट नहीं होगा। और हमें डर है कि जिस तरह हम अपने बच्चे को सरकारी स्कूल से निकाल रहे हैं, इसी तरह हम धीरे धीरे सरकारी यूनिवर्सिटी से भी निकालना शुरू कर देंगे। तो ये जो मतलब हमारे ऊपर स्टिग्मा है, मेरे जितने भी कहीं यूनिवर्सिटी के दोस्त थे, आई वाज रियली सरप्राइज। वो हम बोलते थे कहाँ से पीएचडी कर रहे हो, हम वहां मरमर के पीएचडी कर रहे थे, वो वाला जा रहे हैं बिहार से पीएचडी करके आ रहे हैं। So it has been converted into $1 billion money spinning ये फैक्ट्री। ये स्टिग्मा कौन हटाएगा? ये स्टिग्मा हमें ही हटाना है, बच्चे नहीं हटा सकते हैं। दुनिया में कोई भी ऐप आ जाए, टीचर से बड़ा ऐप कोई नहीं है, अगर हम पढ़े हुए हैं। थैंक यू। तो अगर हम पढ़े हुए हैं, हम अपने टीचर को कभी धोखा नहीं दे सकते हैं। ये हमने देखा है अपने रिसर्च के समय। हम सोचते थे कि बहुत स्मार्ट है, हम कहीं से लिख के ले आते थे, और हम जब जाते थे अपन, मेरे हॉस्टल के सामने ही रहता था, हम जाते थे सुपरवाइजर के पास, वो बोलता था तो यू हैव कॉपिड इट फ्रॉम गुड बुक एंड इट वाज पब्लिश्ड फ्रॉम प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस 1963। आई वाज सरप्राइज्ड। विकिपीडिया के बारे में तो बाद में हम जाने, हमको तो अपना टीचर ही विकिपीडिया नजर आता। ठीक है, तो अगर हमारा ऐप होगा, ये ऐप जो है ये सॉल्यूशन नहीं है। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है वन साइज ये नहीं है कि मतलब वी शुड अवॉइड एथिक्स। एथिक्स हमें करना चाहिए, लेकिन वो अगर हम बच्चे को ठीक से पढ़ाएंगे तो मेरा दावा है कोई बच्चा प्लेजरिज्म की तरफ नहीं जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि आईआईटी का बच्चा, आप खुद देखिए कि अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, ठीक है, अगर मेरा बच्चा मेरे अंदर कोई पीएचडी कर रहा है, बोले तो उसके अंदर क्या है, ठीक किया होगा, ठीक है, वो कहाँ कर रहा है, आईटी के साथ कर रहा है, जरूर अच्छा किया होगा, आईएम के साथ कर रहा है, अच्छा कर रहा होगा, कहाँ कर रहा है, बीएन मंडल मगध, सॉरी विद डी अपोलॉजी, जो भी यूनिवर्सिटीज है, बीएन मंडल मगध, बिहार के जो भी है, ठीक है, वहां कर रहा है, तो किसी तरह रिपोर्ट समझे। दिस हैज बिकम आवर अप्रोच। ये क्यों है? क्योंकि हम पहले ही मान के चल चुके हैं कि यहाँ के टीचर नहीं पढ़ाते हैं, आईआईटी के टीचर पढ़ाते हैं, दिल्ली के टीचर पढ़ाते हैं, जेएनयू के टीचर पढ़ाते हैं। ये परसेप्शन को चेंज करने की जरूरत है। जब तक ये चेंज नहीं होगा, ये जो प्लेजरिज्म है, ये it has become turned itself into poverty of India। जब से हम पैदा हुए पॉवर्टी इंडिया पर पढ़ रहे हैं, उसी तरह से जब से हम बिहार आए हैं तब से प्लेजरिज्म पर सुन रहे हैं, और इट हैज बिकम विशियस सर्किल। हम इसको ऐसे नहीं तोड़ सकते हैं, हमको लेकिन तोड़ना है इसको। हमको वी हैव टू फाइंड आउट कि कहां हम स्ट्राइक करें,
जिसके बाद ये कम होगा। अभी जो हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट हो रहा है, हम जो बड़े फख्र से कहते हैं कि हमारे यहाँ 5,000 PhD हो गया, 6,000 डिलीट हो गया, ये सब हो गया। बेसिकली दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट। अगर जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होंगे तो वो जानते होंगे कि देयर वाज ए इकोनॉमिक कमेटी ऑन लैटिन अमेरिका, जिसके बहुत बड़े प्रोफेसर हुआ करते थे, एंड्रे गुल्डन फ्रैंक। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था और हमारा डेवलपमेंट उसी तरह से हो रहा है जिस तरह से भारत का डेवलपमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश हुकूमत के अंदर हो रहा है। हमें लग रहा था कि डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन बेसिकली वो हमारा शोषण था। नेक्स्ट पॉइंट जो और हम इसमें ऐड करना चाहेंगे कि GER, गवर्नमेंट इज टोटली इनग्रॉस्ड विद GER। GER जो था बहुत पहले खत्म हो चुका है। वेस्ट में कॉन्सेप्ट था कि जब शुरू में लोगों ने आया और कहा कि चलो भैया GER पे हम ध्यान देते हैं, ग्रॉस इन्वायरमेंट रेशियो हमारा बढ़ना चाहिए। अगर हम ये करते हैं, इट मीन्स वी आर बिलीविंग इन क्वांटिटी नॉट इन क्वालिटी। एंड द लास्ट पॉइंट इज क्यों हम PhD करवाते हैं इतना ज्यादा। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो कैंपस के कॉलेजेस है, वहां हर कॉलेजेस में हर सब्जेक्ट नहीं है। अगर फिलोसफी यहाँ है तो पॉलिटिकल साइंस वहां नहीं है। नो, मेरा पॉलिटिकल साइंस है। सेंट स्टीफेंस में पॉलिटिकल साइंस नहीं है, हंसराज में नहीं है। इट्स नॉट नेसेसरी। अगर हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो वो करें, ठीक है, उनके ऊपर कंपल्सन नहीं होना चाहिए। इसको आप लिंक मत कीजिए नौकरी से, क्योंकि जो ही आप लिंक करेंगे नौकरी से, उस वक्त ही यहाँ पे कट थ्रोट कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। कट थ्रोट कंपटीशन इसलिए स्टार्ट होता है क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम है। कट थ्रोट कंपटीशन होना ही है, और जब कट थ्रोट कंपटीशन स्टार्ट होगा तो सब लोग चाहेंगे कि शॉर्टकट मेथड लगाए, और शॉर्टकट मेथड आप डेवलप होगा तो जो आज हम फेस कर रहे हैं सिंडिकेट, ये वाला सिंडिकेट नहीं जहां से हमारा सब पास होता है, वो रिसर्च वाला PhD वाला सिंडिकेट, इट विल कम आउट। तो इन सब चीजों पे हमें ध्यान देना होगा। और मेरे ख्याल से आगे व्हाट आई हैव सेड, इट शुड नॉट बी कंसीडर्ड टू मीन कि आई एम फॉर द प्लेजरिज्म। ठीक है, प्लेजरिज्म इज इंपॉर्टेंट। रिसर्च एथिक्स, हम जो भी बात करते हैं, जैसे अगर कोई पूछे कि हाउ डू यू डिफाइन द रिसर्च एथिक्स, बेसिकली रिसर्च एथिक्स इज डूइंग द रिसर्च इन ए लीगल एंड एथिकल वे, am I right? And we are using the term to legal and ethical. I am using the term in inverted. What is ethical? It is a value laden concept. ये कभी भी बराबर नहीं रहा है। आज से 200 साल पहले सती प्रथा सही था, एथिकल था, आज अनएथिकल है। ये तो हमारा वैल्यू धीरे धीरे चेंज करते जाएगा। पहले जो था लिविंग रिलेशनशिप, ये अनएथिकल था, आज एथिकल हो गया। इवन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रियलाइज्ड इट। आप लोग सब मैच्योर है, मैं आराम से कह सकता हूं। आप याद करेंगे वहां पे कि जब शुरू में यहाँ पे एड्स आया था, तो गवर्नमेंट ने उसको रोकने के लिए ये कहा था कि ये स्टिक टू योर पार्टनर। कुड यू रिमेंबर दिस लाइन? Finally, after 3-4 years, the government of India has realized this blunder, and they have switched over to new catchy slogan: "Use condoms." They have realized it. इसी तरह से हमें भी रियलाइज करना होगा। ठीक है, एथिक्स मेंटेन करेंगे, लेकिन एथिक्स के पहले हमारे जो टीचर हैं वो उस टाइप के हो कि वो PhD, ये सवाल मेरे ऊपर भी लागू होता है, मैं बाहर नहीं इधर खड़ा है तो ठीक है, हम पे भी लागू होता है कि पहले ये देखना चाहिए कि हमारे जो टीचर हैं वो उतने कैपेबल है कि वो रिसर्च करा सकते हैं, दे आर वेल रेड, दे आर एथिकल। अगर टीचर एथिकल है तो हमारा जो स्टूडेंट होगा वो भी एथिकल होगा, उनका रिसर्च भी एथिकल होगा। और इसके लिए हमारे वाइस चांसलर साहब बैठे हुए हैं, आप लोग नाराज मत हो जाइएगा, आप लोग की आवाज हम भी हैं। कम से कम ये जरूर होना चाहिए, अगर इस सिंडिकेट को रोकना है, अगर हमको बिहार की जो पुरानी प्रतिष्ठा है अगर उसको वापिस करना है, शिक्षा वाला नालंदा टाइप, तो अगर कोई टीचर
2-3 बार से ज्यादा प्लेजरिज्म में उसका स्टूडेंट पास आता है, देयर शुड बी ए एडवर्स रिमार्क ऑन हिज या हर सीआर। उनका प्रमोशन रुकना चाहिए, रादर ही या शी शुड बी डिमोटेड। जब तक जिस तरह से अभी बायोमेट्रिक लगने से प्रिंसिपली मैं इसके अगेंस्ट हूं, लेकिन बिहार के हालात देखते हुए ये सही स्टेप था। अब हम देख रहे हैं कॉलेज में लोग रहते हैं, पहले नहीं रहते थे, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूं यहाँ के ऑब्जेक्टिव सिचुएशन को देख के कि जिस तरह से बायोमेट्रिक हमने नहीं चाहा था, लगा हमारा भला ही हो रहा है। इस तरह जब तक ये रिसर्च पर नहीं काबू किया जाएगा, इसको लगाम नहीं लगाया जाएगा, तब तक हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं। और ये पीएचडी के नाम पर केवल गार्बेज ही हम प्रोड्यूस करते जाएंगे, और इसी तरह बाहर से दिल्ली बंबई से लोग बिहार पीएचडी करके आएंगे और डिग्री आएंगे। लास्ट, क्योंकि मुझे निकलना भी है और हमारे वाइस चांसलर सर का टाइम हो गया है लंच का, ठीक है। लास्ट, ये हमने आपके वाइस चांसलर के साथ काम किया है, हमने इनको नजदीक से देखा है, और कुलपति साहब को मैंने नजदीक से देखा है, इनके साथ काम किया है, और कुलाधिपति को सुना है। तो हमको लगता है कि इन दोनों का मिश्रण हो जाए तो आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। थैंक यू। एनी क्वेश्चन? अगर कुछ भी पूछना है तो पूछ लो भाई। Thank you for listening to me. Thank you very much, sir, for your powerful insights. Sir impressed upon the need of tailored learning to proceed with ethical education to break the vicious circle of academic misconduct that involves plagiarism and the need of trained educators. Thank you, sir. I now invite our chairperson, Professor Jamwar, sir, to come for the concluding remarks of this session. मैं रेडी फॉर द क्वेश्चन। और हमें खुशी हो रही है कि आप सवाल पूछेंगे। ऑनलाइन सर, पर मेरा एक क्वेश्चन है सर। ओके सर, आई एम लाउड एनफ। सर, आपने कुछ दिन पहले कहा कि जिन लोग का बार बार प्लेजरिज्म आता है उन्हें या तो डिमोशन किया जाए या उन्हें ऐसा रिमार्क दिया जाए जिससे वो वापस प्लेजरिज्म डालने के लिए 10 बार सोचे। लेकिन क्या ये महत्व ये नहीं होगा कि उसका मिसयूज कर लिया जाए नेपोटिज्म के लिए? ये हो सकता है कि कोई मेरा भाई है, उसको अगर हम चाहते हैं बढ़ाना तो हम प्लेजरिज्म में उसका पॉजिटिव करवा दिया। आई गॉट योर क्वेश्चन। पहले ही तो आप गलत बोल रहे हो कि हम अपने भाई को वहां डलवाना चाहते हैं, ये भी एक तरह से प्लेजरिज्म हुआ। प्लेजरिज्म मतलब ये नहीं कि हम कॉपी टेस्ट कर रहे हैं। सुन लीजिए, प्लेजरिज्म का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है भारत का संविधान। हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड से लिया है, हमने प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी प्रोविजन वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है जर्मनी का, ठीक है। हम दूसरे सेंस में कह रहे हैं, ठीक है। और जो ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, दैट वी हैव बोरोड फ्रॉम द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, बिल ऑफ राइट्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब इसको तो गोली मारो भैया। सबसे बड़ी बात है कि हमारा अपना खुद का सिस्टम भी नहीं बनाया हुआ है। ये जो हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट किया है, बेसिकली ब्लडी वी हैव कॉपीड इट फ्रॉम द वेस्टमिनिस्टर मॉडल, यूके से उठा के ले लिया है। तो हमारा है क्या? हमारा तो कुछ भी नहीं है।
और तुम स्टार्ट कर रहे हो कि हमको अपने चाचा भतीजा का रखवाना है। They said, but this can be misused. The solution that gave, but sir, the solution that gave, it can be misused by other parties. देखो बता रहे चाचा भतीजा बात भी एक तरह से I agree. दूसरा क्वेश्चन भैया ये सब तुम लेट आए हो, ये नुपुर जी बहुत अच्छा बता चुकी है। हमने पहले ही कर दिया था कि मैं इन सब बातों में नहीं पढ़ रहा हूँ, हम अलग बात करने जा रहे हैं। यू हैव मिस्ड द सेशन और अभी जो इनका मक्खनबाजी करो कुछ बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। आवाज भी आ रही है, हवा भी आ रहा है। ठीक है योर क्वेश्चन इज वेरी मतलब बहुत अच्छा था, वैलिड था, समझिए ना। हम तुमको ये भी बता देते हैं कि तुम्हारे वाइस चांसलर जो है सवेरे 6 बजे से लेके रात में 10 बजे तक तुम्हारे लिए अवेलेबल है। जब भी उनको कोई काम बोलोगे मेरे ख्याल से ये सब काम वो सब उनको मन लगता है करने में। भैया उधर रखो, मेरे पास और कुछ एनी क्वेश्चन मिस्टर वाइस चांसलर सर, मे आई टेक माय सीट? थैंक यू सर। पांच दिवसीय कार्यशाला के दिन प्रथम सत्र में हमने अंतिम वक्ता के रूप में डॉक्टर विनोद कुमार झा जी को सुना। उन्होंने अपने व्याख्यान में इस बात पर महत्व दिया है कि रिसर्च वर्क जो हो वह क्वालिटेटिव हो न कि क्वांटिटेटिव, और इसके लिए सुपरवाइजर रिसर्चर सभी को मेहनत करना होगा, सभी को अपने दायित्वों का बहुत ईमानदारी से निर्वाह करना होगा। जब तक गुरु ठीक नहीं होंगे चेला ठीक नहीं होता है। रिसर्च के दौरान जितने भी सुपरवाइजर हैं वो टॉपिक को प्राय देखते हुए सिनॉप्सिस जो तैयार होता है उसमें जो सुपरवाइजर होते हैं उनको उनसे सहमति लेकर या उनके गाइडेंस में इस चीज को उनके गाइडेंस में सिनॉप्सिस तैयार किया जाता है। और प्राय सुपरवाइजर उन्हीं क्षेत्रों को उन्हीं विषयों को रिसर्च के लिए सजेस्ट करते हैं जिनमें उनको डेप्थ होता है, जिनमें उनकी गहराई होती है, पकड़ होती है। तो करंट परिस्थिति में वर्तमान समय में उस गहराई को ध्यान में रख करके सुपरवाइजर टॉपिक को सजेस्ट करते हैं सुधार की। लेकिन ये जो नकल की जो परंपरा है ये एक गलत परंपरा है, इससे हमें बचना चाहिए और इसके लिए दोनों पक्षों की तरफ से प्रयास होनी चाहिए ताकि ये नकल के आरोपों से हम लोग बच सके और शोध कार्य सही माने में सामने आ सके, जिससे विश्वविद्यालय के साथ साथ हमारे बिहार राज्य का भी नाम रोशन हो। बहुत बहुत धन्यवाद झा जी, आपने आकर अपना कीमती वक्त और महत्वपूर्ण सुझाव हम लोगों के समक्ष रखा, हम लोग आभारी हैं। Now we have come to the end of pre-lunch technical sessions and I'm here to extend the vote of thanks. My deepest gratitude goes to our patron, Honorable Vice Chancellor Sir,
Professor S.P. Shahi. My thanks to our co-patron, Honorable Pro Vice Chancellor, to the organizers, convener IQAC, Professor Rahmat Jahan Ma'am, to the organizing secretary, and to the treasurer, Dr. P.K. Chaudhary, sir. My sincere thanks go to Professor Tapan Shandil, Vice Chancellor, Shyama Prasad Mukherjee University, who stopped by on his way to Ranchi and blessed us with his brief presence. I thank the esteemed speakers and the chairperson of all the 4 technical sessions today. My sincere thanks goes to the august gathering of Dean, Head of Departments, Senior Professors, my colleagues, research scholars, and all the participants present here. I thank the rapporteurs of the 4 technical session, media friends, and the technical support team, along with the entire gamut of hands and mind who have worked together to make these technical sessions a success. Thank you so much, one and all. I now request Dr. Meenakshi to make some announcement for the lunch. So it is against the tradition, but Vice Chancellor sir said to me always that for academic work and the progress of the university, I break all the boxes. So in that system, पहली बार vote of thanks के बाद भी Vice Chancellor साहब दोस्तों का आशीर्वाद देंगे आज के researchers को संबोधित करेंगे. Sorry sir for breaking the law. मैं आप लोगों के बीच और लंच के बीच बहुत समय नहीं लूंगा. यहाँ पर बैठे हुए आज के सत्र की अध्यक्षता करते हुए जमुआर साहब, सामने बैठे हुए श्याम बाबू, कॉलेज की IQ कोऑर्डिनेटर और एक्स कोऑर्डिनेटर और ज्योग्राफी एक्स हेड घोष जी, मगध यूनिवर्सिटी की IQ कोऑर्डिनेटर रहमत जहां जी, और यहाँ तमाम उपस्थित हमारे मित्र विनोद झा जी और तमाम उपस्थित अच्छा लग रहा है आप लोगों का यहाँ जुटना और इस मजबूती के साथ बैठ के और तन्मयता के साथ जिस तरह सुन रहे हैं आप, रियली मगध विश्वविद्यालय के लिए और आयोजकों को, मैं शैलेंद्र जी को, गोपाल जी को और आपकी टीम को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ. अपनी टीम को, आप लोगों ने जो बौद्धिक मंथन यहाँ शुरुआत किया है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि यह प्रोग्राम मगध विश्वविद्यालय के लिए टर्निंग प्रोग्राम साबित होने वाला है. तो आप लोगों की उपस्थिति और यहाँ रहना मगध विश्वविद्यालय के बदलने वाले दिन के आप ऐतिहासिक साक्षी बन करके यहाँ खड़े हैं. इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ. आप जो सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और खास करके पूरे बिहार के यूनिवर्सिटीज में जो नए टीचर्स आए हैं, नए फैकल्टी आया है, आपसे हमें बहुत उम्मीद है, खास करके राज्य को बहुत उम्मीद है. और हम समझते हैं कि जिस तरीके से माननीय कुलाधिपति महोदय ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए और बिहार में उच्च शिक्षा को और शोध और नवाचार को बढ़ाने का जो संकल्प व्यक्त किया है, उस मिशन में मगध विश्वविद्यालय अपनी अग्रणी भूमिका में सामने आया है. और हम समझते हैं कि कुलाधिपति कार्यालय द्वारा जो भी टास्क दिया जाएगा और बिना दिए हुए भी टास्क को जो हमारी समझ में लाभकारी होगा टीचर्स के लिए, स्टूडेंट के लिए, मगध विश्वविद्यालय की उपस्थिति सबसे पहले आगे रहेगी. इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप बहुत डेडिकेशन के साथ और बहुत उम्मीद के साथ आए हैं. आप सबको धन्यवाद. आगे भी मगध विश्वविद्यालय में और भी कार्यक्रम करने की योजना है.
14 को उसका हम लोग खुलासा करेंगे। आप अवश्य लाभान्वित होते रहेंगे। धन्यवाद। Thank you, sir, for your encouraging words. We have two important announcements for our participants. सभी प्रतिभागियों के लिए दो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। हमारे रिसोर्स पर्सन हमारे साथ जो भी मटेरियल शेयर कर रहे हैं वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। और दूसरी सूचना आज के मध्याह्न भोजन से संबंधित है। हम अभी आधे घंटे का भोजन अवकाश लेंगे। आप सभी पार्टिसिपेंट्स प्रतिभागियों के लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था पीजी डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश स्नातकोत्तर इंग्लिश विभाग में की गई है। आप जैसे ही इस बिल्डिंग से बाहर निकलेंगे बाई तरफ ह्यूमैनिटीज की बिल्डिंग है जिसमें प्रथम तले पर फर्स्ट फ्लोर पर आपकी भोजन की व्यवस्था की गई है। हमारे पास समय की कमी है, इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि ठीक आधे घंटे के उपरांत आप पुनः इस सभागार में उपस्थित हो जाएं ताकि इस दिन के दूसरे सत्र की शुरुआत की जा सके। धन्यवाद।